Well, hello again, my lovely peoples and my dear gamers. And yes, we are back with another banger scrims. And yes, I'm Solski, will be a caster for this match. Number one best of three series, which is going to be held between the teams Boundless Zero versus Team Kings. And obviously, my side is going to be Asuya. But we will surely shortly go into Hello, the I'm drafting Asuya. phase. We got our Asuya with a hello. How are you, Asuya? I mean, long time no see. Even I don't. Sorry for that, guys. You're not gonna be getting the, Fake oh, Asuya. you will be actually. Yeah, Anyways, fake Asuya, Asuya. the real Asuya, can you please stand up? Yeah, so Asuya has joined us right now, guys. But before we, say hello and hi to her, obviously, and we will go into the drafting phase. Yeah, here we are into the drafting phase. We got Boundless Zero versus Team King, and for the first ban and the first pick, it is going to be Boundless Zero. And I think I'm, first time casting for these both of these teams. I would love to see how these Even the teams fullest play it out. bloom And for the first ban, pales before respecting the the Hirara, scattering gonna ban out the petals. Hirara. I still think that Hirara could be banned by Team Kings, but you know what? It's just fine. So first ban the Hirara, and the second ban that will be coming from the King. What will it be? Hello, Asuya, if you are there with us. How are you, real Hello. Asuya? Different Hi, perspectives I'm good. expose the How are same you? truth. Ray was acting female for you. I mean, but it was too good, by the way. Well, never mind. But the You draft should be looks, ashamed for almost not similar trusting in every game yourself. we They play. call me a hero Time we do have a because I Star saved my being nation from falling underway. apart. Maybe they're planning for something which requires a lot of dashes. Paquito is not banned. Maybe the Paquito or the Phobius, even the Benedetta, or can literally shut down any assassin. So maybe a Ling. What do you think? I think maybe, yeah. I mean, I am the power Boundless of Zero. light Okay, never incarnate. mind. I forgot about the Kaja. Ha! Kings have the opportunity to ban out. Not ban out the pick. Right now, the Paquitos, as you mentioned, Belleric, obviously, and the Belleric and the Paquito. Good start by Kings, and Boundless Zero also with a good start. This Kaja is now so good in objective control as I well. didn't Like it's so cure the his pain. objective control I is so harness quite good. it. And Valentina, so that yesterday I think they watched the I've match. been waiting for I too think long. right now they are picking Valentina. Well, definitely a good option just to, not give away that Kaja's ult. But then there is, the Uranus pick though, kind of skeptical. Maybe they're looking for someone who can sustain in the early. Maybe they're looking for someone who can be the front line or zone. But that again means that towards the late game, you will have one less crowd control. And already see, since Keto, he might go to the jungle too, but then if he's going for the EXP, towards the late, he can literally flank and delete one squishy. So with Uranus, cannot do that, right? So let's see how they trade it off. But for now, the second ban phase already up. What do you think they're gonna ban away? Well, right now they When you have the gaze into opportunity to the ban out abyss, either the marksman or the mage. Yeah, obviously not the marksman or the mage or the Sniper jungler. ready. Jungling Give Ling me a hasn't been target. into the meta for quite so long because in MSC he was meta, but after the later part of the MSC he's not as that much fast hero like a Serra just snowballs really fast. So I think that's why. Other than Ling, I think Nolan is the second, My kiss grants second you best pick immortality for or that early death. spikes into the jungling phase. There is that Selena and the God. Not a big fan of God ban. Why they ban out the God? Because they had the Uranus, they give up the carry. Carry still needs a lot of scaling, so I'm not a big fan of carry as well in this current meta because it is too fast paced for carry. Right now, Boundless Zero have the opportunity to pick out the jungler, and I suppose they might go for some assassin, have the Nolan open. Well, they go opt out for the Nolan, and the gold is left. Gold wise, I think Ranger, Brody, Clint, these three picks might work. But Brody and even the Melissa is left open, so I think Melissa might be the good picks as well. What do you think about Marksman and the jungler here, Asia? Well, I don't think they will go for a Melissa. I mean, need some definitely they stitches? can, I but can help. I think okay, they are going in for I'm the born Melissa. with And I was gonna talent. Yeah, say that I, Bunny is open. Just pick up the Bunny. She can counter the Alice. She can also counter out Pugito, like whoever is there onto the EXP. But as for now, we never know. It might be Alice onto the mid,
And Oh. Paquito, yep, it is Am I Alice seeing on the Alpha? mid. You know, It's Alice mage. It's okay. I mean, but then again, draft heavily depends on the Guinevere. If she can give good sets in the beginning, Team Boundless Zero, they can literally snowball because they have all good earlies. Meanwhile, Team King, the carry, late gamer Alice, a bit of a mid to the late. So I don't know how much the extension of this game would be, but if Team Boundless Zero wants to win, end it as soon as possible. as you mentioned, that depends on Guinevere. Yeah, absolutely. But I think it also depends on this divine binding coming from this Kaja. If that hits onto either of the people, that's basically a free spatial migration violet queen combo for that Guinevere. The synergy is going to be of the utmost important for Boundless Zero. However, Team King, I think their draft is more like every man for themselves. The Alice, the only carry just needs a little bit of support. Alice with the sets, Alpha with the shred, and carry also with the shred. So a lot of it is dependent on onto this Paquito, and especially with the mid lane Alice, they lack lot of early game damage. So they need that constant gank from that Paquito into the into that what do you call it, the objective neutral objective control. So I think King have a little bit, I would say, weak early, but somehow they managed to go on to the second turtle without losing on to the gold. I think they will be very unstoppable in that, in the sustain as well as the damage comp. Yep. And like you said, Hito as well as the Guinevere, I would say, two of the main focus here. And of course, the Kaja's art is there. But even the Valentina can provide sets. She already has the Belric. She even Yeah. has the Throne of Roses from the Alice, and she will be dishing out, in the early, she will be giving more damage than that Alice when she ults. So I think here is how good the Goonie, as well as even the Valentina, will play. And of course, the synergy matters quite a lot. But my question here is Soul. Like Team King, they have kind of a balanced draft. Early strong. They even have something for the late. But then my question is, will Carrie get the space she wants? Because there are a lot of dive-ins, but Carrie does not have that much mobility. Meanwhile, the Belric getting taunted, getting poked. We're with the second skill. Up. Takes that double kill. Already really good start for them. Just like we see early. Yeah, early, I told you, early is weak for Team Kings. I don't know why they're fighting. Into the mid lane, they have a revitalized Alice. Not into the mid. Who is mid? So it's a Paquito. True retribution? No, it's a true retribution comp. Holy. I think somebody missed something onto their draft. But you know what? It's a very, very heavy, I would say, blunder coming in from the Kings. We can see Kaja going in with the punishment. And I think Naruto is going to get watched out in this game. That's a 2-for-0 in just 1 minute 30-second mark onto the game. And again, it's a heavy domination coming in. Again, Kaja with good support coming in from his passive. And holy, that's a 4-0, just not even 2 minutes into the game. And we are seeing an inspired carry. That just two ballsy move in my opinion against a Guinevere inspired carry. Definitely, but look at the Paquito just stealing away the jungle. He might get sandwiched. Yep, there it is, the Kaja, the Valentina. A lot of folks coming up. There's some help coming in from the carry, but then unfortunately, it will be another kill for the Valentina. Already sitting on 2 kills. Well, can I say the snowball already in the hands of Team Boundless Zero? And I don't really with the amount of macro and control and the dominance they're showing. Next on the chopping block. I don't think they are giving the late game in this match, Soul. Yeah, I mean, absolutely, man. I think, look at that. Is this Babu Bhaiya is going in with the Kaja, and he just a lot of damage and reduction that is given by his passive. And right now, I think there will be the muddle onto the Paquito. No knockout jab was there. He will fall down. That's a 4-man taunt. But no follow-up is there because of the damage with the Ravi, with the slide. Okay, Divine Mind thing, as well as there is a Guinevere. This is the combo that we were talking about, Asuya, and that will be it for Team King. And it's 11-for-1 trade-off. Holy, I think Team Boundless Zero, they don't have any boundaries right now because they can be anywhere into the map and then still dominate this game because Team King, they messed up a lot into the drafting phase. Yeah, and they even have 2 retributions here.
that's an additional blunder. Or maybe they were just planning, one person takes their own jungle and the second person takes away the enemy jungle. But as per now, once again, it's the Alice all alone. Ultimate being followed up. She's trying to sustain. Uranus manages to move away. Damn. 4 people climbed onto the Uranus and 1 ult from the Mavericks. Some taunts coming up. Taunts 2 for Keto, the Jack coming up. But team fight was so long, the rest of the team is already there for the support. This once again, the spatial migration and the second skill combo. The Kaja with the divine binding. But then Yeah, that was such a close. Extended that we can Yeah. already see trade Oh my god. But Again, the fight is going on. Giving up on him with this mega kill for the Valentina. Well, what can we say? It's a brawl. Boundless 0. Holy, there's 15 kills just into under 5 minutes. And Team King just have the 1 kill. If we talk about the goal difference, it's approximately 8k. Just under 5 minutes. It's just mind-boggling to me. As well as we can see the fight going on to the red buff area on the side of Team King. And I think Valentina is going in. Valentina with a lot of damage. And there's Alpha with the Alpha charge. And no unstoppable for this Valentina. Divine Binding as well. Just choking down the Alice. And there is the light wheel from the carry, but no damage. Look at the carry. She isn't hitting like a truck. She is hitting like a pew-pew. Like a water gun. Right now, there is... Oh, Kaja was trying to, get his passive onto the Billeric. But fails to do so. So far, so forth. Team Boundless 0 onto the full control and will extend the goal difference around 10.5k. Well, and with this, the second tier might fall off pretty soon. And you are just using, just stack about a beautiful divine binding on 3 people out of the turret. With this, some pokes coming in from the MM, as well as Tina grabbing those kills left and right. She's already on 8 kills, but look at that right inside the turret. Double kill for win. And what can I say? 6 minutes to the game. I think this is one of the early just in the frames if it ends this soon. And with this, once again, the bell return, followed up by the Alice. Divine binding coming in from Kaja, and the legendary as Paquito falls off. Trying to sustain gold aggressiveness. Enough for them. The base has been locked down. The Alpha, I don't know what he's doing, but it's okay. The Violent Requiem and even the carry falls off, but finally a shutdown for the carry. There's 3 members back into action once again. Has fallen off though. Let's see if King is able to defend, because we can already see the pokes coming in from the Melissa. Heading way to double kill for her as Yami is the next one to fall. Paquito going in, trying to secure some kills, trying to buy some time along with the carry with her ultimate, but the damage is not enough. Oh my god, they are spawn killing Team King at this point of time. There is the power riots. But that's going to be the go away from this Melissa. And right now I think they will oh no, that Thorn of ruined the base is quite too low. Nobody's marking the base. There's the medal from the Melissa as well. There's a divine binding on 2 people. Monster kill, double kill for this Melissa. Might go for the triple legendary for this Valentina. Mega kill for this Uranus. Triple kill, and that's a wipeout that was given by from Boundless 0 to Team Kings. And like this, my guys, with dominant fashion, Team King will get this victory. But the Kings, okay, never mind. They will have just surrendered Team Kings. And holy, the blunder into the draft just paved the way for Team Boundless 0 to get a Boundless victory in this match. What a gameplay coming in from Boundless 0. What a domination. Yeah, I mean, I think it's one of the fastest matches which have ended in the scrims. So I think a new record set up for them. And just look at them at this point, 33-2 sheer domination on the side of Team Boundless 0. Like you said, spawn killing. They were just so aggressive. The Kaja was so low, and yet he just decided to come back because he just heal up with the first kill. So yep, as expected. I hope the next match they don't make such a blunder and the draft is a bit better made. Especially, I think, ban away the Kaja. If you did see that whenever they were trying to escape back into the turrets, they always had the divine binding just taking them out of the turrets. So, like we were saying yesterday, Soul, this Kuniver as well as the Kaja combo is actually really broken. Yeah, it is broken, but I think it is broken. Like no cap on that, but
Team King could have played it out a little bit differently. It's not that it is it is broken, yeah, but it's not that it can't be countered. It can be countered as well, but you need to play out a little bit with the discipline, with more of combination as well as synergy. But right now I think Team King, let's just see what they have for us into the second match, because I think they might have learned something from the mistake, and Team Boundless Zero, they just need to win one more match and then that will be it, and they will get their clean sweep. But will the Team Boundless Zero will be able to get a clean sweep, or Team King will make a comeback like a king, just like Virat Kohli? Just kidding. And yeah, so far so forth. I'm not a pretty much big fan of that draft coming from Team King at this point in time. We'd love to see a difference in draft from coming in the upcoming matches as we're going to the game number 2 of this best of 3 series this year. Yep. Let's just wait out for the draft, because I don't have much to say, because even though they were kind of lacking that synergy, then I think the biggest blunder of the 2 retributions, that's something that happened, so can't really judge a team. I think when a blunder like this happens, the team is already kind of, I would say, a bit of a low on confidence from the very beginning. They know that such a big blunder can cost them the entire match. That too against such a strong lineup. There is the Kaja you gave away, there was the Kuniver as well as the Valentina already into their hands. So, yep, it is what it is. Let's wait for the next match. See if they can show us some comeback. Or we see the same kind of aggressiveness and synergy side of Team Boundless. Well, yeah, and I think we're going into the draft. Okay, that's my boy. And we are here into the draft, boys and girls. And that's going to be the King onto the left side this time. We'll be getting the first pick. I love to see that how King will make a comeback in this game, because maybe first game they might have done a little bit of blunder. I hope that they learned and now will not be able to make a blunder in the second match as well. Boundless Zero. Again, that's a Mensitar ban, and Boundless Zero have the opportunity to ban out either the Belleric, either the Khaja, either the Hirara, or they will, they will ban out the Lapu Lapu. That wasn't in my book, and that's a Khaja ban from King himself. I wonder why the King has been banned away constantly. I mean, you can counter him, right? If you play really synergistically and you pick him up, pick him off, and end the game early, he's not much of a threat. Although he does disable a lot with his ultimate, but then again, I think, the Marcel is open, the Atlas is open. Okay, Atlas has been banned away, but a lot of options. The Paquito is open. Even the Valentina, the God, the Eudora. Yep, Hirara is also open. Let's see if Team King opt for that Hirara, or I don't know. What do you think? I don't think so. They will go for Hirara. Yeah, they will go for Paquito. I love the fact that they gone for Paquito for the first pick, because that will give a little bit of flexibility into the draft. But other than flexibility, I don't think so they will get any benefits of that Paquito if Boundless Zero just decides to not go Hirara. They will go for Eudora instead. No Hirara at this point. King just go for Hirara, and you can flex this Paquito onto the gold or onto the XP. And you can also go for Marcel. I am the moonlight that breaks through the darkness. Oh no, that's going to be a Marcel. I want to see a Marcel from King. Marcel, okay. I won't be surprised if Estes comes up soon. Even the fullest bloom pales before the scattering petals. I'm sorry, Yasuya, what did you say? I said I won't be surprised even if an Estes comes up, because they're just going literally for really comfy picks. I think it's a quote from this show only, that is, which this hero show is inspired from. That's a Bruce Lee. If you have practiced 10,000 heroes, I won't fear that man, but I only fear the man who has practiced one kick 10,000 times. It's something like that. So that's why comfy over the meta, mastery over meta, something like that. Won't give away some cliche titles to this, but pretty much draft is so solid for Boundless Zero at this point. Yeah, I mean, there's Eudora, even the Hirara, so I don't know how. I mean, Ramia does have her ultimate for the Purify, and the ults
cooldown has been reduced, so she can, even if the Chao just CCs her, she can move away, reposition herself. I think Mia can be a okay, solid pick. Need Depends some on how well stitches? I she's can played and help. how you're executing it with the team, but why Changi? Out of everything, why a Changi? Like, you don't even see her in rank nowadays, right? Well, I mean, as I mentioned, Asuya, I'm kind of confused about the draft coming in from Team King, but you know what? They might cook with this because they got the Martis, they got this Tigreal, and that's a Freya, that's a Nidora, and that's a Ruby, and that's a Hirara. Holy smokes, the amount of CC along with the damage, full front to back comp, and for Kings as well, it is also a front to back in my opinion, but Boundless 0. It is going to be one heck of a match if Team King got that necessary itemization. If they got the itemization wise, I think they can melt away even this Freya onto the gold, the XP, that Ruby, the jungle, the Hirara, and the mid lane, the Eudora. Eudora is going to have a very fun time in this match because the Paquito will just get decimated by the stun. The Electro Ball that is coming from that Eudora. And I love the fact, Asuya, that Eudora's ultimate name as well as the abilities names are like, kind of Pokemon. There's Thunderstorm, I suppose, that the ultimate name, and that's with the pause. And with the pause, guys, we'll be entering into the land of dawn of the scrims #1, match #1, best of 3 series. It is the best, it is the second game that is going on. Team Boundless 0 has already won the first game, and now they are looking for victory in another game that is going to be game 2 of the evening. Isolski, along with us, we will be a caster for a game or 2 this time, and both the junglers starting off with their standard rotation. So far, so good. I don't think there's a lot of happening. There is a lot of poke damage coming from Eudora. And Yami, I think was Yami the mid lane last time? Retribution has been used and blue buff, no! Again, a blunder from Martis. And Eudora capitalized onto that mistake. Well, I think here comes another snowball as stun connects on to the Tigreal, and of course it is the Chao. Chao even on tank. Tank emblem is really strong in the early. His poke is way too good. With this, you can already see one kill in the hands of Team Boundless 0 and a bad start for the Martis because it doesn't really matter because nowadays even the gold, the other creeps, they do give you kind of okay EXP. So if he decides to just steal away some creeps from left and right, maybe he can just reach his level 4. But unfortunately, I don't think so that is happening because look at the Chao. The amount of vision he's providing. Meanwhile, in top lane, I don't think Mia, it's a good thing to try to poke the Freya because Freya is very strong into the early. She's already level 3. Might look for stuns. I can also see even the Chao is looking for at least one CC with that cheat kundo so that Freya can also follow up. And with this Hirara, she's okay. The Ruby though, with this 2-man punch from the Paquito, getting between 3 people. Up, and Yami follows up, and Chao just has to retreat for now. I was definitely thinking that there might be kills coming up, but look at the Ruby. See, definitely got a bit too greedy, but here comes the Hirara with iframes. Safe for now. And with this, I think pretty good gameplay coming in from that Ruby, that clutch situation where Paquito falls off instead. Too late to follow up to the Paquito. That I am offended isn't there with the Ruby right now. Look at the Freya. Just enjoying the blue buff of that Martis and got the blue buff as well. Mia doesn't know the fact that he was into his blue buff. And Mia pushing the top, and I think might get caught off guard. Yeah, that's a knockup coming in from the existence to op. Holy, is it a goated play? Is it a goated play, or will the Eudora go for some? Oh, My I think that was a clutch escape coming in from the Mia. Holy, this is what I was talking about, Asuya. That is going to be mastery right there. Damn, she baited out Jeet Kundo, she baited out Freya's ultimate. They have pretty good play, but here comes Starfalls. Yami, if I am offended, will be, I think, he has to get offended at this point because the Ruby is literally making everyone offended. Yeah, I would like to see the replay again. But why did that Tigreal flicker? For the moral support? I mean, he didn't even have the ultimate, the implosion.
But yeah, as I was mentioning, that Team King, this time they are not getting, dominated again, like badly dominated. I think they're doing fine. But now, look at the flicker coming. Holy Tigreal, holy. What is that flicker, Tigreal? I need to, ask you. But there is a kill onto the top lane from the Hirada. Implosion connects onto the Chow. Might go for the Mortal Coil or the Decimation play. But nobody holds there. Oh, Decimation, but not enough damage to decimate the Cho. But there is a knockout jab to the Ravi this time. That's a first kill onto King. That will be from the Paquito. And am I seeing a Paquito on a Vengeance? Holy. This team is actually cooking up a lot into the scrims. Because I'm seeing this, onto, scrims, the Paquito onto the Vengeance. It's, it's very amazing. Look at the top lane. That's a play that Mia did. Holy. Mia's gameplay has definitely become one of the highlight plays. That's a real for sure. That is a real. But with this, we already have the Freya kind of low Aurora coming up. I don't know if okay. The ult does not really have the ult, and unfortunately, but here we have kill Change with the meteor shower, trying to just take down some HP. But not a big fan of Change because it will be a double kill for the Hirara. Does have skill just to move away from that Paquito. The IM. Oh no, the decimation. Holy. And with this, once again, Team Boundless 0 aggressiveness with sheer domination. Sea turtles with them. Team King and Team Boundless 0. Boundless 0 again getting their hands onto the snowball. But look at the goal difference. It's approximately 5k. There is the Sky Piercer first item, front of Windtalker. No anti-heal for now. And I think right now Crazy Rich Asian with the Sky Piercer of his own. And the War Axe along with the golden staff might go for the corrosion this time. Freya not going for the War Axe or the endless battle. And Joe with the anti-heal as well. That's a good first item anti-cuirass for the Paquito. I think again that's a highlight in the top lane. I think Hirara could have gotten the kill, but Hirara wanted the kill, so she just flickered into the turret. And so far so good. The map openness is with Team Boundless 0, and I think they're doing pretty good. So, and they just need to continue this in order to win this game. However, the Team King need to wait out for okay, never mind. Just Paquito will have to use his Vengeance. Will he use it? Yeah, he used the Vengeance quite too late into the party. And 3 Babu Bhai just completed his dominance ice. And now they're going in. Okay, stun connects on to Tigreal. Babu goes in. Konoki tries to connect some stuns, but look at the implosion onto literally no one. Ravi might go for I am offended, and here it is, second skill followed up by Rin, and then decimation as a kill because that superconductor. She's way too strong if you have so much CC into your team, but Ito is finally back. Meanwhile, look at Mia all alone in the top lane trying to do a 1v1 against the Hirara. Ito with the Paquito, and here comes the superconductor. Bit of a missed opportunity, but Paquito flanks. Definitely go back phase because damage will be way too much. And in the top lane, we also have the Mia getting taken down. I mean, why is she there all alone? Just for some pushing, So far, so good, I think. What I think, it is just, I think. Never mind, there is a Volcari descent from the Freya free hitting zone. Implosion, Maya doesn't have the damage. There's a Sky Piercer meteor shower coming in from that Change, but they're not too low to proc the Sky Piercer. Paquito senses some danger, have to recall back. 7:34 is the minutes, 7 minutes 34 seconds onto the game, and that's a 1 for 14 kills ratio from both the teams. 14 for Boundless 0, 1 for King. And itemization wise, a lot ahead Team Boundless 0, and they just need to continue this in order to win this game. As I was mentioning, there is itemization, Sky Piercer, War Axe completed, haven't gone for the that Hunter Strike for the first item. Sky Piercer is building for that Paquito, and Paquito is actually holding out on pretty good in this game because everybody has died quite more times than Paquito except Martis, and that Paquito has the same death. But I'm offended is looking, Rav is looking for some I am offended, but nobody holds there. Nobody holds. So far, so good. King will survive the day. Okay, never mind. That's a superconductor with from the Eudora, the flicker, implosion again onto John Cena because you can't see him. That will be the dual fans from the Hirara Mycenae as well.
Martis have to run away with the Mortal Coil. And that's a close call for Team King. There will be 2 trades for none. Blue team turret has been destroyed. With this, the Holy Shields from all 3 inhibitors will be toppling off for now. And what can I say? I think King a bit of lacking team fight and also the draft too. I mean, this is why you don't pick the Changi, right? Because she struggles when there are a lot of walls to aim that ultimate. But Hirara going in, some of the stuns connecting. And with the Ruby, I am offended in the second skill, but the Valkyrie's descent. Look at the amount of damage she's tanking. The Mia's damage isn't enough either. But once again, it tried it down. By the Hirara, the meteor shower falling off, but Naruto is next on the chopping block. It is a double kill. The kill for win, but look at Hirara, the way she's diving in. Oh! Holy! Yeah, shut down. A good implosion from the Stigriel. Okay, moving away the minions out from base. But then again, it will be easy kill on the nest. And some damage takes down the tower instead. But here we have Pakito once again. 3 versus 4. The minions are coming up. Okay, Mia is also back into action. The ultimate trying to melt down the minions. They have the lane clear, but here we have way up the Mia. Right forward. Does not have to purify for the escape, but wins once again. Ruby all alone. Pakito and with the summation still for him. Next it might be the but it is I mean, bro, she's way too farmed up. Literally deleting away the Martis. Martis definitely he needs to build at least the Athena, I guess. Yeah. Right now, Team Boundless 0. Holy, the thunder clap. It was not thunder breath. He just clapped that. In Naruto, she's just too strong for now. Look at the replay right there. Okay, that's Electro Ball and Thunder's Wrath, and he just deleted. Holy, Thunder Fan was also there. And I love how developers have named her abilities. Like, holy, it feels so good to say those, Thunder Ball, Electro Ball, Thunder's Wrath. It just feels like some Pokemon kind of, abilities that we are talking about. But there is the Holy Crystal. Holy. That is going to be unholy amount of damage right there with that Eudora right now. And there will be possibility to win this game. And I think Eudora might look for some flicker play again. They all are, grouped up. And that's a very, very cheesy dream for that show as well as the Ruby. And as well as for this Rhine as well. Look at the Asuya. That's only I'm offended. That's a Valkyrie descent. There's a meteor shower just trying to clear out the implosion onto the minions. And trying to push Rhea out of but then again, it is the tower going up, the way of dragon right inside the fountain. He takes down Cammy. He was just trying to zone away the Mia because they just had to mark down the base. And with this, I would say straightforward games. I think expected victory from the side of Team Boundless 0, a clean sweep of 2-4-0. Difference of skills is quite a lot, but I think the second game was quite better than the first game by the side of Team, Kings. But in order to prove that they are the king of this scrims, they need to, they need a lot of improvement in the gameplay. But however, he showed up for the fight. I think that's a respect. That is of deserving some respect. Yeah. So far, so forth. I think Team Boundless 0, they just won this game with 0 sweat so far. I think that is just it for the game number 1, match number 1. The best of 3 series of the scrims, and we will see you guys for the game number 2. And before we go, please like, share, subscribe the stream, and also do your necessary drills, guys. Watch us onto live streams with our scrims, and also follow us onto our description box, onto our social media panels. The links to that is onto our description box, so follow us there. And the second game, which will be going to be between Team Sureales versus Team Valiant Ghouls, it is going to be worth a watch. See you guys after a short break. Along with me, Solski, along with the Suya, will take a short break.
हेलो हेलो, आप सभी को नमस्कार एंड इसी के साथ वेलकम करना चाहती हूँ यहाँ पर मोबा वार्म अप क्लैश के सेकंड मैच ऑफ द डे। आज के मैच में हम देखने वाले हैं कुछ अतरंगी, कुछ मजेदार, तो चलिए देखेंगे। मेरा नाम पीची एंड मेरे साथ आज शिंद्रा बने रहेंगे। सो हेलो शिंद्रा, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ पीछे, एकदम बढ़िया हाल चाल है और उसी के साथ वापसी हमारी होती हुई दिखेगी यहाँ पे मैच के लिए। और आज जो है सामने दोनों टीम जो आपस में लड़ती हुई दिखेगी। बेस्ट ऑफ 3 की ये सीरीज चल रही है अभी वार्म अप क्लैश में। और उसी के साथ साथ जो टीम से नए बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट्स वगैरह लाती हुई दिख रही है, नई स्ट्रेटेजीज वगैरह हमें आती हुई दिख रही है। एक्सपेरिमेंट्स की भी बात की जाए तो वो भी काफी अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि स्क्रीम्स में आप ऐसी चीजें जो है वो टेस्ट जरूर करना चाहेंगे और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे आप नई चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं बेसिकली अपने लाइनअप के साथ। तो वो हमें कहीं ना कहीं आती हुई दिखी है और उसी के साथ आज लेट्स सी किस तरीके जो गेम है वो हमें देखने मिला क्योंकि एक तरफ रहने वाली है टीम लॉस, दूसरी तरफ रहने वाली टीम वैलियंट गूल्स और इन दोनों के बीच में जो आई थिंक काफी अच्छा मैच यहाँ पर जाता हुआ दिखेगा। बात करें वैलियंट गूल्स की तो अभी रिसेंटली आई थिंक उन्होंने जितना इम्प्रूवमेंट दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने मैक्रो माइक्रो की बात करें दोनों के ऊपर पकड़ बनाई है वो काबिले तारीफ। उसी के साथ जो मैच है वो जरूर स्टार्ट होता हुआ जाएगा बैन सेक्शन की तरफ। वहां से जो हीरोज है वो हमें बैन होते हुए देखेंगे। काजा बैन हुआ है, उसके साथ साथ हिरारा बैन होता हुआ दिखेगा, एटलस बैन हो चुका है। ओके, और उसी के साथ एस्मराल्डा का भी आगमन हो जाएगा बैन सेक्शन पे। ओके, और उसी के साथ साथ बेलरिक और मार्शल, ये दोनों हीरो काफी ज्यादा नए रहते हैं असैसिन्स के लिए, तो इनको बैन किया जाएगा अभी। डेफिनेटली एक बात है कि ये सब हीरोज काफी अनोइंग है एंड पूरी की पूरी तरह से टीम फाइट डिस्टर्ब करती है, तो वो नहीं चाहिए कि ये सब हम बैन देख रहे हैं आज। बट लॉस रियल्स जाते हैं पकीटो के साथ। फर्स्ट पिक पकीटो थोड़ा सा अलग सा है बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन टू अ जंगलर साइड बिकॉज अभी भी थोड़े बहुत जंगलर्स ओपन है, बट कोई बात नहीं। वेलियंट गूल्स के हाथ पे आ चुका है बराज और यूडोरा। मैंने आजकल काफी देख रही हूँ कि वेलियंट गूल्स ये वाला टीम ट्राई कर रही है एंड थोड़ा बहुत लाइनअप चेंजेस भी दिख रहा है, तो आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस टू सी न्यू मेंबर्स कैसे क्या करेंगे और उनका सिनर्जी कैसे बेटर रहेगा क्योंकि व्हेन यू गेट न्यू मेंबर्स एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिनर्जी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम वो ही देखने वाले हैं आज कैसे वो होने वाला है। लॉस रियल्स 2 पिक उनके हाथ पे। अभी एक बात है कि उन्हें ऐसा मेज लेना है जो रेंज देगी। फारसा जैसे मेज डेफिनेटली काम क्या आएगा, बट मेटा पे नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत दिक्कतें आने वाला है। बट यस, डैमेज तो है उनके हाथ पे, तो आई डोंट थिंक फारसा जैसे हीरो देखने मिलेंगे। बट एक मिनट पकीटो जंगलर या फिर गोल्ड लेन पे भी जाते हुए देख सकते हैं, तो वो फ्लेक्स पे यहाँ पे मानते हुए चलेंगे। एलएस की बात करें, एलएस यहाँ पे आते हुए दिखेगी। एओई थोड़ा सा मिलेगा जरूर कंट्रोल, लेकिन बस कहाँ है मेरे दोस्त, आपके पास पकीटो ही रहेंगे। और मेरे को लग रहा था कि शायद से जो हमें मिड लेन की तरफ से जो है कहीं ना कहीं एक बर्स्ट देखने को मिलेगा क्योंकि कार्मिला के साथ जनरली जो बर्स्ट है वो काफी अच्छे तरीके से बैठता है। उसी के साथ साथ टीम वेलियंट गूल्स वो जो है पिक करते हुए दिखेगी। हाइलोस का आगमन हो चुका है। हाइलोस ब्राट्स एंड इडोरा काफी अच्छा कॉम्बो है। इडोरा की बात की जाए लाइक वो भी काफी अच्छी तरीके से चल रही है मेटा पे। एलिस जरूर उनको थोड़ा सस्टेन करती हुई दिखेगी। और कार्मिला की बात करें, कर्स ब्लड जब लगेगा उनका लेट्स सी कितना बड़ा इम्पैक्ट से यहाँ पे लाते हुए दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होती हुई दिख रही है क्योंकि सामने फ्रंट लेनर बहुत अच्छे खासे, तो उनको कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए कुछ ऐसा चाहिए, टैंक मेल्टर की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर बनाते हुए रखेंगे। उसी के साथ एमएम के ऊपर बैन आता हुआ दिखेगा। क्लॉड यहाँ पे बैन हो चुके हैं। उसके साथ साथ बेट्रिक्स जो है उनको भी बैन किया जाएगा। कैरी अभी भी ओपन है, कैरी को यहाँ पे बैन कर सकते हैं। और कैरी के साथ साथ और कौन सा हीरो यहाँ पे बैन किया जाएगा? ओके, लिंग डेफिनेटली यहाँ पर नीडेड था। वेलियंट गूल्स के हाथ पे लिंग गाने का काफी ज्यादा चांसेस था, बट उन्होंने खुद ही बैन कर दिया है क्योंकि उन्हें नहीं देखना है वो, बिकॉज देयर इज अ चांस कि बराज भी जंगल हो सकते हैं। देखते हैं अगर वो EXP जाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी वेलियंट गूल्स के हाथ पे पिक एंड उसी के साथ हमें मे भी पता चलेगा। मार्क्समैन में अभी ऐसा मार्क्समैन चाहिए जो मेल्ट करे। कैरी हटा दिया गया है। ब्रूनो काइंड ऑफ अ गुड पिक, बट एलिस जैसे हीरो, पकीटो जैसे हीरो के हाथ पे पकड़ आने के लिए बहुत इजी है, सो आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें वो देखने मिलेगा। बट वेलियंट गूल्स वी नो देयर मार्क्समैन, तो आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस कि क्या आज प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे।
Let's fight to our देखने वाली heart's बात content. होगी, लेट्स सी। और चलिए यहाँ पे लूकस का आगमन होता हुआ देखिएगा। ओके लूकस मैचा में बात की जाए तो इतना नहीं है, लेकिन लूकस चलेंगे जरूर अच्छे खासे। अगर जंगल की तरफ खेलते हुए दिखेंगे, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मेटा से बाहर हो गए थे, लेकिन अभी भी एक अच्छा खासा कंटेंडर बने हुए हैं। लाइक उनका जो बीस्ट फॉर्म रहता है उस पर वो आराम से जाते हुए वो डैमेज दे सकते हैं, और जो खुशी हीरोज रहते हैं उनको कहीं ना कहीं डैमेज देने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब करते हैं। लेकिन कहीं ना थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, क्योंकि पहले जैसा सस्टेन जो है लूकस के पास नहीं रहेगा। ऑफकोर्स डैमेज यहाँ पे रहेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखेगा पीछे की टीम फाइट में जो है लूकस खुद सेक्रीफाइस हो जाएंगे, बट जाते जाते वो किसी ना किसी एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स को अपने साथ लेते हुए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। वेलिंग वुल्फ थोड़ा बहुत मोबिलिटी के साथ खेल रही है, एंड बारात EXP लेनर ही जाएंगे। कुछ तो नया देखने मिल रहा है दोनों के दोनों साइड से, क्योंकि एक साइड पे हम 3 फाइटर्स देखने मिल रहे हैं। थोड़ा ज्यादा मैजिक डैमेज हो चुका है लॉस सरियल्स के पास, लाइक 4 जन वहां पर है। एंड विलियन गूल्स थोड़ा सा टैंक ही, अगर जैसे ही वो डिफेंस आइटम बना देते हैं, रेडिएंट आर्मर वगैरह, काइंड ऑफ प्रॉब्लम आने वाला है। एग्जैक्टली मैं भी यही पॉइंट बोलने वाला था कि लॉस सोरियस के पास बात की जाए यहाँ पे, लॉस सोरियस के पास तो यहाँ पे उनके पास ना मैजिक डैमेज बहुत ज्यादा है। लाइक फिजिकल गेम सिर्फ फकीतो रहेंगे बस के तौर पे। अब जब भी आपकी टीम बहुत ज्यादा मैजिक के साथ जाती है तो अपोनेंट्स के लिए आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे काउंटर करना बहुत इजी हो जाता है। बेसिकली वो मैजिक आइटम डाल लेंगे अपना, और उससे आपकी ऑलमोस्ट जो है पूरी टीम जो है यहाँ पे बोल सकते हैं काउंटर हो जाएगी। तो एक रेडिएंट भी डाल लेंगे ना, तब भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा टीम के बीच में। डैमेज जो है पूरा डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगातार मैजिक डैमेज पड़ने वाला है। इसका भी यहाँ पे लगातार ही पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे सस्टेन करने के लिए हाईलॉस तो और ज्यादा यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखेंगे। और आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद से हाईलॉस के ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी आया था, या थिंक वो शायद एडवांस सर्वर पे आया था, अभी मेरे को याद नहीं है। रिसेंट पैच में मे बी शायद अभी नहीं आया, क्योंकि हाईलॉस का बेसिकली उन्होंने एक चीज चेंज किया था कि उनको जो एक्स्ट्रा एचपी मिलता था उसको माना पे जो कन्वर्ट करते थे बेसिकली, तो वो यहाँ पे चेंज होके अभी एक चीज कर दिया है कि उनको माना एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा एचपी जो है वो वहां पे नहीं मिलेगी। तो पहले जिस तरीके से हाईलॉस रहते थे कि एक वॉल है, बहुत ज्यादा एचपी है, मतलब हाईलॉस उठाई इसलिए जाता था कि उनके पास लाइक एक बोल सकते हैं कि एचपी का भंडार रहता था, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा अगर वो चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं इस समय। तो डेफिनेटली बॉटम लेन पे काफी ज्यादा प्रेशर, हैरत को पूरी की पूरी तरह से एक सपोर्ट देते हुए यहाँ पर वेलियंट गोल्स ट्राई कर रहे हैं, बट टॉप लेन पे काफी अच्छी तरह से बारात डोमिनेट कर रहे। ये देख के क्या ही देखने मिल रहा है कि एलिस को यहाँ पर सेफ खेलना पड़ेगा। मे बी अराउंड द टीम फाइट्स यहाँ पर सुरेलियस शाइन होने का ज्यादा चांसेस है, बट फर्स्ट ब्लड में भी आ सकता है। यहाँ पर काफी ज्यादा स्टन नॉकअप्स नेल के हाथ पे, एंड ये हुई उनकी मौत। जाना पड़ेगा एज अ फर्स्ट ब्लड, करना पड़ेगा वहां पे अकेले पकड़ा। और बात की जाए जिस तरीके से थोड़ा सा जोन आउट किया वहां पे लूकस को, उनका जो गोलम है वो वहां पे मिस करवाया, जिसके कारण अब एक लेवल थोड़ा सा नीचे रहेंगे वो। और यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा लिजार्ड की तरफ आते हुए दिखेंगे। गुनिवर मौजूदा है, स्पेशल माइग्रेशन आ सकता है, लेवल 4 होने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। स्पेशल माइग्रेशन आएगा जरूर, लूकस पीछे से मौजूदा थे, डैमेज देते दिखेंगे, और उसी के साथ अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है, फिनिश ऑफ किया जाएगा मैक्स को, और यहाँ पे रोकने का प्रयास, लेकिन फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए गए हैं। टावर का वो डैमेज लगेगा, और O2 he got cooked पीछे से आते हुए दिखेंगे, और उसी के साथ कुक भाई ने कुक कर दिया यहाँ पे। ओह नाइस गेम, डेफिनेटली नाइस गेम कमिंग इन। लॉस एरियल्स अर्ली गेम जितना भी उनके हाथ पे लेना चाहते हैं ले रहे हैं, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। एंड इसी के साथ मुझे देखना है कि मिड गेम पे कैसे होगा। ओके, O2 got cooked is there, but उसके लिए एक counterpart, I cook your rice is also there, who just got taken down, and Zyrex यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा डैमेज ले रहे हैं। ये तो शिंद्रा एक बात है कि विलियन गोल्स का जो जंगलर है अभी O2 got cooked, वो मार्क्समैन खेलते थे, एंड आजकल विलियन गोल्स न्यू रोल्स ट्राई कर रहे हैं, वो काफी अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा सिनर्जी अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नए लोग हैं एंड यहाँ से अर्ली गेम दिक्कतें आ रही है। हाँ बोल सकते हैं लाइक, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि वेलियंट गूल्स का जो सबसे प्लस पॉइंट मेरे को लगता है कि वो अडेप्टेबिलिटी उनके पास अच्छी खासी रहती है।
वो जिस सिचुएशन से अडेप्ट करते हैं ना वो काबिल तारीफ रहता है। यहाँ पे एलिस आते हुए दिखेगी, जोन आउट बहुत अच्छी तरीके से किया था, लेकिन पीछे यहाँ पे इडोरा का उनका स्टन आता हुआ दिखेगा। उसी के साथ ओचू जाना चाहते थे लेकिन उनको पकड़ते हुए विश्राम देते हुए जाएंगे सेलेस्टियल ट्वाइलाइट। यहाँ पे लेके गए चल वो इंपॉर्टेंट चल, लेकिन एक एचपी में बचते हुए निकलेंगे कार्मिला। ओ नहीं, उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा एलिस के द्वारा। ओके, कमाल का वो फाइट होता हुआ दिखा था, लेकिन ओचू वहां पे अच्छी तरीके से मार्क करना चाहते थे, पीछे की साइड गए, कोशिश किया, लेकिन वो काइटिंग वो आया यहाँ पे। और चावल जो थे इस बार कच्चे तो नहीं भाई, इस बार पूरे पके हैं, और ओचू वो भी पक गए साथ में। डेफिनेटली चांसेस यहाँ पर क्या ही था कि यही होने वाला था। हाइलाइट्स में भी देखिए कैसे यहाँ पर घेरा गया था हर एक जन को, एनएससी के साथ किसी को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। बट इसी के साथ वेलियंट गूल्स भी फार्म अप हो रही है, विच इज अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम सूरियल्स आर द वन वापस से लीड। चलिए कोशिश रहेगी, यहाँ पे मौजूदा है, थोड़ा सा डैमेज देते हुए दिखेंगे, गुल लेने का प्रयास कर रहे हैं। पकीतो वहां पे आते हुए दिखेंगे, अंदर की तरफ गए हैं, जैब लगाया है और पीछे से आएंगे ओचू डैमेज देते हुए, लेकिन टावर का कितना डैमेज लेंगे। ओके किल लिया, लेकिन खुद ताराशाही होंगे यहाँ पे। मैक्स वो आए पीछे से डबल किल देते हुए जाएंगे। टीम वेलियंट गूल्स थोड़ा सा मैं बोलूंगा इम्पेशेंट हो रहे हैं अभी, धीरे धीरे वो किल्स के लिए जाते हुए दिख रहे हैं, और लाइक मैं बोलूंगा थोड़े से रैश डिसीजन यहाँ पे मैं देखने को मिले हैं। और मैंने ये पहले ही बोला था पीछे की O2 जो है वो जाएंगे जरूर टीम फाइट की तरफ, लेकिन खुद सैक्रिफाइस होते हुए एक बंदे को तो लेते हुए जाएंगे, और वो वैसा यहाँ पे होता हुआ भी दिख रहा है। कार्मिला मौजूदा रहेगी, अल्टीमेट उनके पास मौजूदा है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अंदर की तरफ गए, डैमेज देते हुए एलिस यहाँ पे सुकअप करना चाहती है, जमान फोन का इस्तेमाल किया है, कोरोना डैश लगाते हुए डैमेज पीछे देते हुए दिखेंगे। ग्लोरियस पाथवे आता हुआ दिखेगा, ओचू आ चुके हैं, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है, डैमेज देने का प्रयास, उसी के साथ पीछे हटते हुए जाएंगे, थोड़ा सा हील अप लेना चाहते हैं। ओके, ब्रास का अल्टीमेट आएगा, वॉल पे स्टन किया जाएगा, ट्रिपल किल दिया की तरफ से, एक और डैमेज आता हुआ है, हील करने का प्रयास करती हुई जाएगी, एक एचपी बचते हुए निकलने का प्रयास, लेकिन ओचू वो फिर दोबारा अंदर घुसे, जिसके कारण यहाँ पे जो डैमेज है वो पड़ा, फिर दोबारा से धाराशाही होंगे। आइटमाइजेशन की तरफ एक बार जाना चाहेंगे, आइटमाइजेशन फटाफट से एक बार देखना चाहता हूं मैं। और चलिए यहाँ पे एडमिशन आता हुआ दिखेगा, हंटर स्ट्राइक के साथ गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे डैमेज थोड़ा रोकने के लिए वो मैजिक रोप का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। फटाफट से देखना पड़ेगा कि रेडियंट की तरफ कब जाते हुए दिखेंगे, क्रोनोडाइस का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे एलिस अकेले फंसेंगे 3 बंदों के बीच में, क्या वो सस्टेन कर पाएगी, कोशिश उनकी तरफ से, लेकिन वो हील आता हुआ दिखेगा, शटडाउन मिलेगा फाइनली नहीं की तरफ से, और ये वो भी बढ़िया उनका जो है यहाँ पे धाराशाही किया उनको। टर्टल का आगमन हो चुका है, टीम टर्टल के लिए आना चाहती है, लेकिन पकीतो छुपके से वो टर्रेट निकाल देंगे टॉप का। वो स्प्लिट पुश का कमाल यहाँ पे किया, मैक्रो के ऊपर थोड़ी सी बढ़त हासिल करी, और ये देखिए जिस तरीके से रिप्ले की तरफ यहाँ पे नजर डालते दिखेंगे, क्रोनोडाइस का इस्तेमाल करते हुए डैमेज दिया था, ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल किया, फिर वहां से जो हील आया एलिस का, वो कमाल का हील आता हुआ, वो पूरा हील करती हुई गई थी, ज्यादा देर तक सस्टेन करी, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, तो एंटी हील उसकी जरूरत की आवश्यकता यहाँ पे बहुत जल्दी रहने वाली है। ओके, ट्रिपल के लिए यहाँ पे मिला था उनको, और उसी के साथ साथ ये फाइट दिखे कंटिन्यू होती भी गई। डेफिनेटली जैसे हम देख रहे हैं दोनों की साइड पे इक्वलाइज हो चुका है, बट यहाँ पर मैक्स 1 मिनट, नाइस कॉस ऑफ ब्लर कमिंग इन, बट क्या ही नॉकअप उसके वजन से सबके सबको मिल चुका है। कायरो यहाँ पर भागना चाहते हैं, बट ने अनस्टॉपेबल पिकअप कर चुके हैं, उनका जो सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर टीम फाइट पे इज इमेंस, वेरी गुड। एंड इसी के साथ वेलियंट गूल्स लीड पे आ चुके हैं यहाँ पर मिड गेम टू द लेट गेम, डेफिनेटली उनका डैमेज जो स्पाइक था वो आ चुका है यहाँ पर। बेसिकली जो डिफेंस थे ना वो बनने लगे हैं, लेकिन इसी बात का मैं बोलूंगा कि लॉस ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, वो स्प्लिट पुश की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, जिसके कारण वो टॉप का टैरेट यहाँ पे मिल चुका है, और उसी के साथ साथ बॉटम का टैरेट लेने के लिए जो कोशिश कर रही है टीम वेलियंट, उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनियंस का आगमन अभी तक नहीं हुआ है, उनको लेंस कट करनी पड़ेगी, और उसी में ज्यादातर टाइम वेस्ट हो जाता है, जब तक वो जाते हैं वहाँ पे जो है पीछे से बैकअप आ जाता है। कोशिश यहाँ पे रहेगी फटाफट से, बहुत कम है यहाँ पे, हेड को थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा। फाइनली O2 आते हुए दिखेंगे, बॉटम लेन का टैरेट जो है वो लेने का प्रयास करते हुए दिखेंगे, क्रॉस मैप प्रोग्रेशन वो कहीं ना कहीं निकालने का एक प्रयास हो सकता है उनकी तरफ से, और सफल भी रहेंगे उसमें। चलिए एक टैरेट के ऊपर बोल सकते कि बढ़त हासिल होती हुई दिखेगी,
ओके चोल लाइट थोड़ा सा पीछे हटे हैं इस समय। ऑल राइट, काफी अच्छे तरीके से पकड़ बना चुके हैं। अर्ली गेम जिस तरीके से जाता हुआ दिख रहा था, अब लॉस सरीरियल्स की तरफ से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि गेम बैकअप हो चुका है। अब उनको थोड़ा और संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंट गोल्स उन्होंने जो है यहाँ पे डिफेंस बना लिया है, तो मैजिक डिफेंस अब आ जाएगा। जो आपके पास एक स्पाइक था वो आपके हाथ से अब जाना लगेगा। तो रेडिएंट सबसे पहले मेरे को देखना चाहिए कि रेडिएंट यहाँ पे डाला ही नहीं, क्योंकि रेडिएंट अगर डालते तो मैक्सिमम पॉइंट वहीं पे उनको मिलेंगे। और रेडिएंट डालने का सबसे बढ़िया फायदा ये रहेगा कि एक तो किमी का डैमेज आपको थोड़ा सा कम पड़ेगा, उसके साथ साथ बाकी के जो मैजिक डैमेज आएंगे वो भी कंटिन्यूस डैमेज पे ही काउंट होंगे। तो वहां पे आपका जो है दबदबा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। पकी तो वहां पे मौजूदा है, मिनियंस क्लियर आउट हो जाएंगे। और टीम को देखिए यहाँ पे स्पेशल माइग्रेशन आता हुआ दिखेगा, अंदर तरफ आते हुए ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल किया है, पीछे से यहाँ पे कोशिश करना चाहते हैं। ओके यहाँ पे लगाया है, उन्होंने डैश का इस्तेमाल किया है, डैमेज दिया है, स्पेशल माइग्रेशन बचे हैं, आराम से बचते हुए निकले, पीछे से डैमेज देना चाहते हैं और बहुत ही कम एचपी बचे, लेकिन यहाँ पे बीस्ट बीस्ट बॉम्ब का इस्तेमाल किया और उसी के साथ कुक किया है यहाँ पे आई कुकी और राइस को, वो भी O2 ने काफी अच्छी तरह से पका रहे हैं यहाँ पर दोनों के दोनों साइज, पर यहाँ पर वापस से वेलेंट गोल्स की डोमिनेंस दिख रही है। पूरी की पूरी मैप रेड होते जा रही है, ब्लू की कमी हो रही है। एंड इसी के साथ स्टन पड़ गई एलिस को, एलिस फ्रंट लेन पे वापस से पीछे चली जाती है एंड धराशायी हो जाएगी। एंड इसी के साथ पकीटो डैमेज कंट्रोल करना चाहते, कर्स ऑफ ब्लड काफी अच्छी तरह से 3 जन को लगा, बट कोई नहीं आया बैकअप के लिए, काफी गलत टाइम पे। एंड मार्सी को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि ऐसे कर्स ऑफ ब्लड का क्या नतीजा होगा। सस्टेन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वैलेंट गोल्स कर रही है फाइट पे। अब उनका प्लस पॉइंट बन चुका है, जितना ज्यादा ब्रॉली आप फाइट लोगे उतना ही ज्यादा टीम वैलेंट गोल्स को यहाँ पे होगा। अब बात की जाए लॉस सरीरियल्स की तरफ से, उनके पास जो आप बोलेंगे कि एडवांटेज है ना, वो एक वन साइडेड एडवांटेज है। आपने कार्मिलियन अल्टीमेट लगाया अपना, अगर उसके बीच में आपने बर्स्ट नहीं दिया, वो बर्स्ट की कमी कहीं ना कहीं भी महसूस हो रही है। डीपीएस जरूर मौजूद है, लेकिन किमी ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते डैमेज देने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे डैमेज देते हुए दिखे थे, पीछे की तरफ बचते हुए गए, बहुत ही कम एचपी पे बचते हुए यहाँ पे O2 निकले। उसके बाद कर्स ऑफ ब्लड लगा, लेकिन फॉलो अप पे डैमेज ही नहीं था जो रेंज उसमें जो है डैमेज दे पाए कोई भी, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा फायदा हुआ नहीं। फिर बचते हुए पीछे की तरफ निकले, लेकिन मार्सी उनको जो है यहाँ पे वो फिनिश ऑफ कर दिया गया। ओके लॉर्ड का आगमन होता हुआ दिखेगा टॉप लेन से, और बॉटम लेन की तरफ इफाजा हो सकता है टर्रेट के ऊपर, मैक्स के ऊपर प्रहार होता हुआ, उनको पीछे धकेलने का प्रयास किया जाएगा, अल्टीमेट का इस्तेमाल, लेकिन स्पेशल माइग्रेशन सही समय पे काम किया, बचते हुए निकले। और बॉटम का जो टर्रेट है वो भी जाता हुआ दिखने लगेगा, कोशिश पूरी होती हुई दिखी है, O2 के ऊपर प्रहार, बचना पड़ेगा, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए पीछे निकले। विंग्स उनका पॉप ऑफ हो चुका है और इसलिए अभी जो है पीछे आते हुए दिखेंगे। 10-17 का स्कोर ये जो है होता हुआ जा रहा है पीछे। एक तरफ जिस तरीके से लॉस सरोस जो मैच को डोमिनेट कर रही थी अर्ली गेम पे, मिड गेम के बाद से वो थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं। अब डेफिनेटली जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही है टीम लॉस सरीरियल्स के लिए, बट अभी तक पूरी की पूरी होप्स खत्म नहीं हुई है, अभी भी बाकी है गेम। एंड बेस्ट ऑफ 3 सीरीज होने के एक अच्छा बात है कि सेकेंड गेम पे एब्सोल्यूट डोमिनेशन देखने के लिए हमें मिल सकता है। फॉर नाउ वेलेंट गोल्स ऐसा एक टीम है जो पहली बार देखा है कि अर्ली गेम का थोड़ा पैसिवली खेलते हैं, उतना अग्रेसिवली नहीं, जब ओपनिंग मिलती है तो तब जाती है, ऐसा काइंड ऑफ गेम प्ले मैंने बहुत कम देखा है। एंड ये हमारे स्क्रिम्स एल्गाम्बो esports पे मे बी वुड बी द फर्स्ट टीम फॉर मी। तो आई डू वांट टू सी यहाँ पर लेट गेम पे मिनियंस कैसे सिंक्रोनाइज होंगे, प्लस इनहिबिटर्स कैसे जाएंगे। सेलेस्टियल ट्वाइलाइट काफी अग्रेसिवली खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ओवर एक्सटेंशन रहेगी। अंदर तरफ जाते हुए दिखेंगे, डैमेज आता हुआ दिखेगा और वहां पे मौजूदा रहने वाले अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए वार स्प्लिट किया जाएगा, कोशिश करना चाहते हैं। O2 आ चुके हैं, उसी के साथ अपने बीच फॉर्म में डैमेज देते हुए दिखेंगे। क्लॉस का इस्तेमाल किया, बीच बॉम्ब, और उसी के साथ डैमेज दिया है, पीछे हटे इस समय। ओके मौके का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिक्कत हो सकती है, बाहर निकलेंगे डैश का इस्तेमाल करते हुए, और पूरी तरीके से एक तरफ खदेड़ दिया गया है टीम लॉस सरीरियल्स को, और उसी के साथ यहाँ पे लॉर्ड लेने के लिए आ चुकी है टीम, कोशिश करना चाहते हैं, क्रोनो डैश का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम है, बचेंगे, मैक्स लेके ताराशाही कर दिया जाएगा कायल के द्वारा, उसी के साथ पीछे हटे, कमाल का डैमेज आता हुआ उनकी तरफ से। एक जो लीड है वो बना चुके इस समय टीम वेलेंट गोल्स,
वो कमाल की लीड के ऊपर काम करते हुए, और इसका तोड़ लॉस के पास नहीं है इस समय, और वही दिक्कत अब उनको साबित हो रही है, वो कमी उनको खल रही है। इतना ज्यादा मैजिक डैमेज आप गए जिसके कारण आपको इतना ज्यादा लॉस जो है यहाँ पे सहन करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे रेडिएंट आ चुका है, उसके साथ साथ नोटिस करेंगे दो गार्डियन हेलमेट यहाँ पे लगे 2 हीरोज के ऊपर, तो एचपी बेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है जो आपको मेल्टडाउन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अभी लॉर्ड का आगमन हो रहा है मिड लेन से, और मिड लेन का लॉर्ड बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि घातक होता है। उसके लिए डिफेंड करने के लिए यस कार्मिला उनके पास जरूर रहेगा जिससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है, बट वेलियंट गूल्स दे हैव द सस्टेन, दे कैन सस्टेन इट। देखिए फर्स्ट इनहिबिटर टूट चुका है, दूसरी इनहिबिटर टॉप से और बॉट्स में भी टूटने वाली ही है। इसी के साथ लॉर्ड आ चुका है बेस के सामने। यहाँ पर क्या ही डैमेज दे रहे लूकस, फिर भी एक जन को निकाला गया, मेगा किल एंड खिमिना होते हुए यहाँ पर लेन क्लियर कौन ही करेगा। किलिंग स्प्री फॉर कायल एंड बेस पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसी के साथ वेलियंट गूल्स फॉर द फर्स्ट विन। कमाल का डैमेज आता हुआ, कमाल की सिनर्जी आता हुआ, जिस तरीके से लॉर्ड को यहाँ पे जो लेन्स है वो सिंक्रोनाइज किया। और देखिए नजर डालते हुए यहाँ पे मिड लेन से टॉप के मिनियंस देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे आ रहे थे और कोशिश करना चाहते थे थोड़ा सस्टेन करने के लिए, लेकिन पीछे से नहीं वो मौजूदा थी। और ओटू का वो कमाल का बोलिंग है यहाँ पे, जिस तरीके से वो उन्होंने फाइट इंगेज किया, इनिशिएट काफी अच्छी तरीके से मार्क डाउन किया, उनको वहां पे हटाया ताकि लॉर्ड जो है बेस को सीधा डैमेज दे सके, और उनको जो है जोन आउट किया। जिस तरीके से ओवरऑल बात की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खेले, और उसी के साथ साथ लॉस आज थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अब ड्राफ्ट के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस जरूर आता हुआ दिखेगा, और ज्यादा मैजिक वहां पे हो गया था तो वो वहां पे थोड़ी सी काम करने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ सेलेस्टियल ट्वाइलाइट वो जो है एमवीपी बनते हुए देखेंगे इस मैच के। माय गुडनेस, सेकंड गेम क्या कहलाएगा। यहाँ पर सुरेल्स को थोड़ा सा आई थिंक ड्राफ्ट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट देखी बहुत सारा होल्स था एंड उसी कारण यहाँ पर उतना अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। बट वेलियंट गूल्स का भी जो परफॉर्मेंस था, इट वाज जस्ट नॉट बिकॉज सुरेल्स के पास ड्राफ्ट की कमी थी, इट वाज ऑल्सो व्हेन वेलियंट गूल्स नो व्हेन टू स्ट्राइक। यहाँ पर एक छोटा छोटा सा गैप रहता है, ओपनिंग्स रहती है यहाँ गेम पे, अगर तुम वो बराबर टाइम पे ओपनिंग कर लेते हो तो डेफिनेटली किल्स या ऑब्जेक्टिव वो बहुत इजीली आपके हाथ में आ जाता है। एंड वो ऑब्जेक्टिव्स अभी तक देखने के लिए काफ़ी अच्छे तरह से करते हैं वेलियंट गूल्स। क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं एवरी डे प्रैक्टिस करके जाते हैं। ये ऐसा एक टीम है जो मैंने स्टार्ट से देखा है। हम स्क्रिम नंबर 40 पे आ चुके हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर 30 प्लस में तो इनका नाम आप देखने ही वाले हो। तो इसी के साथ आई डू वांट टू सी मोर न्यू टीम्स कमिंग एज वेल। यस, स्लॉट्स आर लिमिटेड, सो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए। अगर आपको रजिस्टर करना है यहाँ पर तो डिस्कॉर्ड आ जाइए, डिस्कॉर्ड पे सब कुछ वहाँ पर स्टेप्स है, सब कुछ वहाँ पर है। एंड आपको एडमिन्स भी होंगे यहाँ पर, मॉड्स होंगे जो आपको हेल्प भी करेंगे। एंड इसी के साथ चलते हैं गेम नंबर 2, दूसरे गेम की तरफ बढ़ते हुए। और ये मैच जिस तरीके से गया था, वो फाइट जिस तरीके से गई थी, आई थिंक थोड़ा सा चेंजेस जरूर आएगा इस बार ड्राफ्ट में लॉस की तरफ से। बैन्स की बात करें तो आई थिंक इडोरा बैन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बनती हुई दिखेगी। पिछले गेम की बात करें या फिर पिछले दिन की बात करें तो वहां पे भी इडोरा पिक हुआ था और ने की तरफ से वो इडोरा गेम प्ले आता हुआ दिखा था। उनका जो बर्स्ट आ रहा है जिस समय, या बात की जाए तो जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी मिल रही है इडोरा के साथ, बेसिकली यू कैन गो आइदर फुल बर्स्ट या तो फिर आप जो है यहाँ पे सस्टेन मतलब थोड़ा सा सीडी रिडक्शन बिल्ड की तरफ भी जाते हुए दिखते हैं, जिसमें थ्रू आप वन स्किल जो है पहली जो स्किल है वो लगातार आप स्पैम कर सकते हैं। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इडोरा के साथ, तो उसका भरपूर रूप से फायदा उठाया है यहाँ पे। वो डैमेज उनकी तरफ से आ रहा था, वो डैमेज उनकी तरफ से लग रहा था, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं बोलूंगा कि उसको एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। चलिए बैन सेक्शन की तरफ एक बार नजर डालेंगे। बेलरे खिरारा और उसी के साथ काजा बैन होता हुआ दिखेगा टीम वेलियंट गूल्स की तरफ से। लॉस की बात करें तो चलिए इडोरा को इस बार बैन किया गया, जिसे मैं बोल ही रहा था। Definitely, Okaza is going to be a very must ban। यहाँ पर कोई भी टीम ओपन नहीं रख सकती, अगर ओपन भी रखती है तो डेफिनेटली एनिमी उसका एडवांटेज लेते हुए
पिक करने ही वाला है, तो वो नहीं देखना है करके यहाँ पर बैन्स ज़्यादा होती है। आई थिंक फर्स्ट मैच से हम देख रहे हैं, बट लॉस सुरेल्स क्या लेने वाले हैं यहाँ पर। यूडोरा का उनके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ओके वेट, यूडोरा आउट ऑफ द वे, यूडोरा को बैन किया गया है, बट गॉड जैसा हीरो मे बी कुड बी गुड, कज कार्मेला को अगर स्लो करते हो तो दिक्कतें बढ़ेगी। कार्मेला जैसे हीरो को मोबिलिटी चाहिए ही है। इफ यू वांट काउंटर अ कार्मेला, मोबिलिटी इज अ मस्ट। एंड क्योंकि लास्ट गेम पे हमने काफी ज्यादा मोबिलिटी देखा, तो उसकी वजह से वेलियंट गूल्स वर काइंड ऑफ इन अ सेफ पोजीशन व्हेन यू नो लॉस सुरेल्स का जो कार्मेला था काफी अच्छा सेट दे रही थी। लाइक 3 से 4 जन पकड़े जा रहे थे कर्स ऑफ ब्लड में। एग्जैक्टली। और चलिए आप चेंजेस थोड़े से आते हुए देखेंगे। एलिस जरूर पिकॉस के साथ साथ कढ़ीता ये अच्छा पिक रहेगा, जो मेज को कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हो। गॉड का अगर पिक आता तो उनको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, लेकिन गॉड अभी थोड़े से मरूंगा नर्फ हो गए। उसी के साथ लिलिया का आगमन होगा। ओके, सेलेस्टियल लाइट फिर दोबारा जाते हुए देखेंगे। EXP बराट्स पिछले बार गए थे, MVP लेते हुए गए हैं। बराट EXP बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। ओके, कैरी यहाँ पे ट्रेड ऑफ किया, ये अच्छा लगा है मेरे को। कैरी आपने लिया है तो एक मैच डीलर की बात करें तो वो टैंक मेल्टर वहाँ पे रहेंगे। अगर लॉस सुरेल्स यहाँ पे एक और चीज कर सकती है अगर चाहे तो वो डायरॉथ के साथ भी जा सकते हैं। डायरॉथ इट्स बेसिकली वेरी गुड काउंटर अगर आप किसी भी सस्टेन हीरो के साथ अभी जा रहे हैं। और अगर करंट मेटा की बात करें तो मैं बोलूँगा कि डायरॉथ जो पिक है ना, उसके साथ आप बहुत अच्छा खासा डैमेज गिव अप दे सकते हैं। और हमने लाइक MSC में भी देखा था जिस तरीके से डायरॉथ पिक हुआ था, उसका रीजन भी काफी अच्छा खासा है। उनका जो बेसिकली आर्मर बस्टर है, जो पैसिव है, जो यूज होता है सेकंड स्किल पे, वो बहुत ज्यादा डिफेंस जो गिरा देता है अच्छे खासे सस्टेन टैंक्स का। और लाइक अगर जैसे बराज जैसे हीरोज है, उनके एंगेज में खेलने के लिए बेस्ट है, वो आप जा सकते हैं इजिली। अगर डायरॉथ पिक आते हैं या जंगल भी जाते हैं तो डायरॉथ जंगल भी काफी अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर EXP के तौर पे जाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे फ्लिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डायरॉथ को बैकलीन को पकड़ते हुए जा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। लेकिन और भी ऑप्शन बहुत सारे खुले, जरूरी नहीं कि डायरॉथ के साथ ही जाए, क्योंकि कैरी ऑलरेडी पिकअप हो चुका है। बस कैरी के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये रहेगी कि उनके पास रेंज कम है, तो रेंज जो है वो थोड़ा सा इशू यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। और उसी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के हिल्डा का आगमन होगा, बट आई डोंट थिंक कि हिल्डा इस मेटा पे कहीं भी चल रही है। लाइक पिछले जिस तरीके से यहाँ पे हिल्डा का आगमन हो रहा था, बात करेंगे पिछले मेटा पे जैसे कि चल रहा था, वो बहुत ज्यादा पिक हो रही थी। लेकिन जब से अब मेटा शिफ्ट हुआ है यहाँ पे पीछे, हिल्डा इज नॉट वर्किंग इन दिस मेटा। डेफिनेटली, यू नो लाइक जब भी असैसिन मेटा चालू हुआ था, जस्ट टैंक मेटा के बाद, दिस वाज लाइक यू नो 5 to 6 सीजन्स अगो, तभी हिल्डा वाज वेरी पॉपुलर। यू नो बहुत सारे टीम्स लेते हैं। बट अभी के जो मेटा पे हम बात कर रहे हैं, इवन दो असैसिन्स आर मेटा, असैसिन्स आर बीइंग पिक्ड लेफ्ट एंड राइट, फिर भी हिल्डा नहीं काम कर रही है, क्योंकि वही बात है कि EXP लेनर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आती है। एंड वो प्रेशर के साथ EXP लेनर को भी यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा तुम्हें टीम हीरो चाहिए, स्पेशली ऑन टू द टैंक, कि तुम्हारे मेज, तुम्हारे मार्क्समैन प्रोटेक्टेड हो। तो हिल्डा जैसे हीरो काफी यू नो नहीं चलता है, तो इसी कारण हम नहीं देखते। बट चलिए, ये मैच में होगा या नहीं, क्योंकि अभी लॉस सुरेल्स एक मैच हार के आ चुके हैं। आई मीन हार तो नहीं बोल सकती, डेफिनेटली कुछ अच्छा ही उन्होंने यू नो प्रैक्टिस अपना यू नो टीम कॉम्पोजिशन सेट किया है, वो काम नहीं किया है। बट ये मैच में काफी अच्छे हीरोज लेके आए हैं, तो आई डू वांट टू सी दिस लाइनअप वर्किंग आउट। एंड इसी के साथ चलिए लैंड ऑन की तरह स्वागत होता हुआ आप सभी का देवी सज्जनों लैंड आउट ऑन पे। और उसी के साथ हम वापसी करेंगे इस मैच के लिए। पहला मैच यहाँ पे वैलियंट गूल्स वो जीत चुकी है, उसी के साथ लॉस सुरेल्स जो है वो वापसी करना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती है कि यहाँ पे कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाले हैं। और उसी के साथ साथ कैरी यहाँ पे लेते हुए दिखेंगे। क्लाउड उनके सामने है, एलिस और सस्टेन करती हुई दिख रही हैं। और मिड लेन की बात करें, वहां से थोड़ा रोटेशन आता हुआ दिख सकता है। चलिए आते हुए दिखेंगे। मैक्स वहां पे मौजूदा है, लेकिन इस समय थोड़ा सा दिक्कत दिया जाएगा। ओके, बहुत ही कम एचपी में बचे हैं इस बार। ओह, कार्मिला बाल बाल बचती हुई गई है यहाँ पे। MM जरा सा बचे यहाँ पे। क्लाउड उनके ऊपर प्रहार हुआ था। ओके, जिस तरीके का गेम यहाँ पे जा रहा है, काफी इंटरेस्टिंग गेम चलता हुआ जा रहा है। बॉटम लेन की तरफ दिक्कत पड़ सकते हैं। RC वहां पे मौजूदा है और क्लाउड के ऊपर निशाना बनाया जा सकता है।
लॉर्ड को कोई आइडिया नहीं है कि वहां पे कोई हो सकता है। हिल्डा आती हुई दिखेंगे, डैमेज दिया है सेकंड का इस्तेमाल और उसी के साथ फर्स्ट ब्लड लेते हुए जाएंगे। और यही दिक्कत रहती है जब आपके पास विजन ना आ रहे। विजन इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिल्डा जो है वो हमेशा बुश में घूमती हुई दिखेगी, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही करनी पड़ेगी एमएम को कि जितना हो सके बुश से दूर रहे इस समय, जब तक कि विजन यहाँ पे उनके पास नहीं रहता है। कडिता स्टन दिया है काफी अच्छी तरीके से। ओके, इस बार बोल सकते हैं कि शुरुआत जो है टीम लॉस की वो अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। फ्रेया O2 वो जाते हुए दिखेंगे अंदर और यहाँ पे डैमेज दिया, लेकिन गलत डिसीजन जिसके कारण एक और किल जो है यहाँ पे दे बैठेंगे। फिर दोबारा से लॉस यहाँ पे जो है वो अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि अर्ली गेम उनका काफी अच्छी तरीके से जा रहा है। अब टर्टल भी जो है इनके हाथ से चला जाएगा क्योंकि O2 ऑलरेडी यहाँ पे डेड है। ओके, टर्टल को यहाँ पे रीसेट कर दिया, ये अच्छी बात है। ब्राट्स वहां पे आते हुए दिखेंगे, 4 बंदों के बीच में दिक्कत हो सकती है। अंदर की तरफ गए डैमेज देते हुए और यहाँ पे अल्टीमेट आएगा मैच के द्वारा। रेजा यहाँ पे अल्टीमेट देते हुए बहुत ज्यादा डैमेज देंगे और रिवाइटलाइज का इस्तेमाल किया, हील कर दिया जाएगा, पूरा हील बचते हुए जाएंगे। उसी के साथ पीछे से आई है और मार्क को किया यहाँ पे खत्म करते हुए दिखे, मार्क लगाते हुए इसी के साथ। ओके, थोड़ा सा डैमेज देने का प्रयास किया है, ब्लू बफ मिलेगा यहाँ पे। जंगल ओके, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं चल रही है इस समय। वेलियंट घोल्स थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, लेकिन सेम स्थिति हमने जो है पिछले बार देखी थी पीछी कि अर्ली गेम पे लॉस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही थी, लेकिन वहां से जो है गेम पलटा था। लेट्स सी यहाँ से क्या होता हुआ दिखेगा। और हिल्डा वहां पे मौजूदा है, आई थिंक अंदर जाती हुई दिखेंगे जी, बिल्कुल यहाँ पे नापा गया, डैमेज देने का प्रयास, स्लो डाउन आएगा, पीछे हटते हुए जाएंगे। आरसी काफी अच्छा मैं बोलूंगा यहाँ पे इस बार वो इंगेज कर रही हैं। और देखिए हाइलाइट्स की तरफ नजर डालते हुए देखेंगे, पीछे की तरफ गए थे, O2 बहुत ज्यादा डैमेज लिया टरेट का और उसी के साथ यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया था। भाई O2 और IQ राइस इन दोनों के बीच में भाई कमाल की राइवलरी चल रही है एक दूसरे को किल को लेके, कौन किसको कुक करेगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मिनियंस वो रोकने का प्रयास करते हुए देखेंगे, लास्ट हिट जरूर किया है, पीछे हटे हैं, कार्मिला मौजूदा है, लोकेशन यहाँ पे जो है रिवील होती हुई दिखेगी। डैमेज दिया गया है एमएम के ऊपर, थोड़ा सा चिन करने का प्रयास, सुयू वहां पे मौजूदा है, सन दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जाएगा और उसी के साथ मैक्स एक और किल लेते हुए जाएंगे। 0-5 का स्कोर इस बार वेलियंट घोल्स थोड़ा सा पीछे पड़ते हुए। और मैं बोलूंगा कि लॉस उनकी तरफ से कमाल का रिटेलिशन आता हुआ, कमाल का वो डैमेज आता हुआ। सुयू को जो स्नोबॉल चाहिए अर्ली गेम पे वो यहाँ पे धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है और 2 से 3 किल अगर और मिलते हैं सुयू को तो फिर उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। That is definitely true, but Sureales यहाँ पर मैच के हाथ पे काफी ज्यादा किल्स देते हुए यहाँ पर उनका स्नोबॉल अभी चालू हो चुका है। बट जैसे शिन्ना ने बोला है कि मिड टू द लेट गेम वेलियंट घोल्स डेफिनेटली हैज अ बेटर ग्रिप एंड टू द फर्स्ट मैच, तो ये होने का चांसेस अभी भी है। बट Sureales अभी कोई ओपनिंग नहीं दे रही है। टर्टल आ चुका है, ये होने वाला है दूसरा टर्टल, यहाँ पर मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। वाइल हिल्डा इज ट्राइंग टू बी देयर फॉर द मैक्स दी सुयू। उसी के साथ हम देख रहे हैं कि एलिस भी बैठी हुई है क्योंकि उन्हें भी पता है कि EXP लेनर्स अभी उनका विजन नहीं आ चुका है। बॉटम लेन पे काफी ज्यादा खतरा, आई थिंक यहाँ पर कैरी को भागना चाहिए। कोशिश करेंगे अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, लेकिन कैरी चकमा देके इजीली निकल जाएगी, पीछे से बैकअप आने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डेस्परेट मैं कहूंगा कि स्थिति आपने चूज करी, अंदर की तरफ गए थे, फुली कमिट नहीं किया, जिसके कारण आप पीछे हटे और एमएम इजीली बच के वहां पे निकल गया। उसी के साथ ओके फ्लिकर यहाँ पे यूज करवाते हुए दिखेंगे, टावर के ऊपर टाइप किया था, पीछे हटी है टीम वेलियंट घोल्स। उनके पास ओपनिंग नहीं है इस समय, उनके पास उनका खाता भी अभी नहीं खुला है, लेकिन इस बार अच्छे दिन लॉस सुरेल के उनके अच्छे दिन आ चुके हैं इस समय। जिस तरीके से वो जा रहे हैं इस मैच को, हिल्डा काफी अच्छी तरीके से एक प्रेशर क्रिएट कर रही है जो चाहिए और उसी के साथ डैमेज लगाते हुए देखिए सेकंड इस्तेमाल, लेकिन वो कुकअप हो जाएंगे और यहाँ पे अल्टीमेट लगेगा जरूर। कोशिश उनकी तरफ से आती हुई, लेकिन कैरी उनका भी डैमेज यहाँ पे आ चुका है। एक के बाद एक जो है पूरी टीम वो जाती हुई दिखेगी। एक आध का स्क्रू लाइन, बॉटम लेन फाइनली खुलेगा, मौके का फायदा उठाया जिसके कारण टरेट के ऊपर थोड़ी सी बढ़त हासिल होती हुई दिखेगी। ओके, यहाँ पे चाहिए उनको बचते हुए निकलना पड़ेगा, इस समय थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओके, अंदर की तरफ गए डैमेज देते हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज और आएगा। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है ब्लेजिंग, लेकिन यहाँ पे
मेज पीछे से आ रही है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओके अंदर की तरफ जाते हुए, ओके स्पॉट यहाँ पे कर लिया गया है, तो अभी नहीं किया है। ओके अभी कर लिया है यहाँ पे स्पॉट, बचते हुए गए, DMI लगाया वहाँ पे, पीछे हटे, क्रैब लिया। जिस तरीके की टीम बन रही है यहाँ पे, टॉप कट एक टरेट में यहाँ पे मिल चुका है, तो बोल सकते हैं कि टरेट के मामले में बराबर चल रही है। किल्स के मामले में टीम वैलेंस घोल वो पीछे है अभी। और बात करें यहाँ पे जो एक लीड बनाई है, गोल्ड लीड, वहां पे वैलेंस घोल अभी पीछे चल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी फाइट जीतती है तो वहां से जो लीड है ये पूरी कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। मौके का फायदा लेट्स सी उठाते हैं या नहीं, कोशिश की जाएगी, जोन आउट करेंगे एलिस बहुत ही इजीली। फ्रिया यहाँ पे टर्टल से बहुत ही ज्यादा दूर, तो वो ट्रेड ऑफ करेंगे ब्लू बफ के साथ। ओके पीछे की तरफ आती हुई दिखी कि रोटेशन आता हुआ जाएगा, MM मौजूदा है यहाँ पे, बच के निकलना चाहते हैं O2, क्या वो दोबारा पकड़े जाएंगे? लीप ऑफ फेथ का इस्तेमाल किया है, बचते हुए निकले, वल्गैरिटीशन का इस्तेमाल, और पीछे की तरफ आती हुई दिखेगी, MM के ऊपर प्रहार होता हुआ जाएगा, डैमेज देते हुए जाएंगे, ब्लेड का इस्तेमाल किया है लेकिन पर्याप्त डैमेज नहीं रहेगा, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाएगा। कर्स ऑफ ब्लड का इस्तेमाल किया, 3 मध्य पकड़े गए, यहाँ पे स्टन दिया गया है, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? कोशिश पूरी, डैमेज देने का प्रयास, MM की तरफ से डैमेज आता हुआ और इजिली यहाँ पे उनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। O2 कोशिश करना चाहते हैं यहाँ पे डैमेज देने का, लेकिन वो सस्टेन हिल्डा का इतना ज्यादा है कि इस समय वो इजिली शील्ड के द्वारा बचते हुए निकलेगी। अंदर की तरफ जाने का प्रयास, MM के ऊपर प्रहार होता हुआ दिखेगा, हिल्डा वहां से आती हुई दिखेगी, लिलिया वो डैमेज देने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी आइटमाइजेशन की कमी है। जब तक एक अच्छी फाइट यहाँ पे नहीं आती हुई दिखेगी तब तक आपके ऊपर वो बोल सकते हैं कि एक एडवांटेज वो आपको नहीं मिलेगा। और 2-10 की पारी यहाँ पे होती हुई जा रही है, 4K का फार्म डिफरेंस आ चुका है, और वो फार्म डिफरेंस के कारण चाहे अगर अच्छी अल्टीमेट लगती भी है तब भी यहाँ पे वैलेंट घोल उसको कन्वर्ट करने में मैं कहूँगा असहायक रहेगी। कोशिश करना चाहते हैं O2 के ऊपर प्रहार, रेजे बहुत ही अच्छे अल्टीमेट लगाएंगे, 2 बंदों को पकड़ा है, और इस बार सेलेस्टियल ट्वाइलाइट वो भी दौरा होते हुए दिखेंगे। यही दिक्कत रहती है अगर आप कैरी बैन नहीं करेंगे, टैंक मेल्टर आपको बैन करना आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे आई कुक योर राइस आएंगे अपने अल्टीमेट के साथ और कुक कर देंगे। इस बार डबल किल मिलेगा, उसी के साथ मिड का टरेट वो जाता हुआ, और क्या ये यहाँ पे एंड साबित होता हुआ जाएगा कि कैरी के पास फार्म आ चुका है। कैरी को रोकने वाला कोई ऐसा हीरो है नहीं जो बस जो इजीली उनको रोक पाए। डेफिनेटली ट्रू। हाइलाइट्स में देखिए यहाँ पर हमें देखने मिलेगा जैसे IQ की और राइज में काफी अच्छे तरह से उन्होंने रफ वेव्स मारे थे, एंड यहाँ पर वो बुश कैंपिंग वाला सिनेरियो बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसी के साथ सुरेलियस यहाँ पर चालू करेंगे लॉर्ड के साथ, एंड ये लॉर्ड के साथ दे विल डेफिनेटली ट्राई टू अचीव समथिंग दैट इज टेकिंग डाउन द इनहिबिटर्स। थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट चांसेस तो डेफिनेटली ज़्यादा है कि हमें वो देखने मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वो होने वाला है या नहीं, बट इसी के पहले थोड़ा सा फार्म कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों की साइड ट्राई कर रही है, स्पेशली टू द साइड ऑफ टीम वेलियंट गुल्स। आइटमाइजेशन भी देख रहे तो लाइक डबल द गोल्ड, वो भी एनिमी के हाथ पे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ स्थिति थोड़ी सी खराब होती हुई जाएगी। सस्टेन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, लाइक जो तोड़ यहाँ पे कैरी जो है क्रिप्टोनाइट बने हुए लगातार, उनकी तरफ से जो ट्रू डैमेज आ रहा है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, जैसे पिछले बार सेलेस्टियल ट्वाइलाइट जो है इजीली सस्टेन करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए डैमेज आता हुआ दिखेगा, O2 उनको खाली कर दिया जाएगा, और कोशिश करने का प्रयास, अकेले यहाँ पे मौजूदा है क्लॉड, उनकी तरफ से डैमेज आता हुआ पीछे हटना पड़ेगा उनको हील अप करने के लिए। पर दिक्कत यही है कि क्लॉड के पास डैमेज जरूर है, बट उनके पास तो सेफ ओपनिंग नहीं है, सेफ रूम नहीं है जहाँ पे वो अंदर जाके डैमेज दे पाए। अगर वो अंदर जाते हैं तो उनको स्टन का जो है सामना करना पड़ता है, और हिल्डा का जो स्किल डैमेज है वो भी बहुत ज्यादा है इस समय, तो वो चाह के भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए सेलेस्टियल ट्वाइलाइट, वो एक काम कर सकते हैं, अगर किसी भी तरीके से अपने अल्टीमेट के थ्रू वो कैरी को पकड़ते हैं और कैरी को मार्क डाउन करते हैं। कैरी एक बार अगर निकल गई किसी तरीके से तो देन यहाँ पे टीम वैलियंट घोल्स उनके पास अपॉर्चुनिटी बनेगी वो फाइट लेने की, क्योंकि फाइट लेने से पहले ही आप नोटिस करेंगे कैरी का जो डैमेज आता है वो सीधा सेलेस्टियल ट्वाइलाइट या तो फिर कार्मिला उनको जो है मेल्ट डाउन कर देता है। डेफिनेटली चलिए देखते हैं क्या करेंगे वेलियंट घोल्स। यहाँ पर उनका
पोटेंशियल अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ हमें देखना पड़ेगा टीम्स क्या करने वाली है, स्पेशली फॉर वेलियंट गूल्स जो यहाँ पर ऑलमोस्ट बस इनहिबिटर के साथ बैठी हुई है, थोड़ा बहुत पेट्रीफाइड गुड कॉम्बो एलिस के पास, एलिस बच चुके एंड इसी के साथ कॉस ऑफ मैटी को किल, एक मिनट यहाँ पर सेलेस्टियल ट्वाइलाइट वेलियंट गूल्स की पूरी तरह से लेट गेम पोटेंशियल आ चुकी है, कमबैक दिखा रहे अर्जुन दाराशाही काय के हाथ पे डबल किल एंड इसी के साथ वेलियंट गूल्स पुश डाउन करना चाहती है, एब्सोल्युटली टेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल। कोशिश यहाँ पे की लेट गेम के ऊपर वो बाजी लगाई और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की अपने लिए, उसी के साथ मिड का टरेट लेते हुए जाएंगे। दूसरी तरफ से लेन कंट्रोल करना भी चाहते हैं, रेड बफ अभी लेने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। एलिस वहां पे मौजूद है, वो किसी भी तरीके से रोकना चाहती है लेकिन अकेले उनको भी पता है जाने का फायदा होगा नहीं, पीछे हटे हैं इनवेडेड टरेट, वो बचा लिया जाएगा अभी। तो बोल सकते हैं कि चलिए वो तो बच चुका है, लेकिन लॉर्ड का आगमन 15 सेकंड में होने वाला है। एक और फाइट यहाँ पे चिड़ती हुई देख सकती है और ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि लॉर्ड यहाँ पे जिसकी तरफ जाएगा तो मैप कंट्रोल जो है वो उसकी तरफ खिसकता हुआ दिखेगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। टॉप लेन के ऊपर एक बार नजर वहां पे खाना चाहेंगे, शायद फाइट हो सकती है लेकिन कैरी वहां पे मौजूद है डिफेंड करने के लिए वापस आती हुई दिखेगी। मेज के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कार्मिला अंदर की तरफ जाएंगे, मार किया जाएगा, इस बार स्टन मिला है, पीछे हटे हैं। ओके, ब्लू बफ लिया जाएगा सुयो के द्वारा और लॉर्ड के लिए टीम जो है यहाँ पे पोजीशन लेती हुई दिखेंगी। लेट्स सी क्या कोशिश रहेगी। रीजा मौजूदा है यहाँ पे, पीछे की तरफ आते हुए दिखे हैं। सुयो भाग करना चाहते थे यहाँ पे बुश की तरफ, डैमेज देने का प्रयास, उससे पहले पीछे हटे हैं। हिल्डा अंदर की तरफ जाएंगी, डैमेज दिया है, थोड़ा सा पोक करने का प्रयास किया है अभी। और कार्मेला की तरफ से लेट्स सी क्या वो अल्टीमेट आता हुआ लगेगा, उससे पहले कोशिश करना चाहते हैं। अंदर की तरफ डैमेज आते हुए जाएंगे, जो बिल्कुल पीछे से यहाँ पे आते हुए दिखेंगे और डैमेज लगा है, क्या वो बच पाएंगे? कोशिश कर्स ब्लड का इस्तेमाल, लेकिन पीछे से फॉलो अप आता हुआ दिखेगा। एक किल मिलेगा यहाँ पे, कैरी की अल्टीमेट खुल चुकी है, पीछे हटेंगी वो। ओके, एलिस बचते हुए निकलना चाहती है, इसी के साथ आउट नंबर हो चुके हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जाएंगे, प्लेस का इस्तेमाल और कमाल का के यहाँ पे खेलते हुए फिनिश ऑफ कर दिया गया है यहाँ पे कैरी को और इसी के साथ सीधा गए हैं लॉर्ड लेने के लिए। हिल्डा वहां पे मौजूद है, अपना पूरा कॉम्बो इस्तेमाल करेंगी, उसके साथ डैमेज लेते हुए पीछे आएंगे और फाइनली टीम वेलियंट गूल्स उनको मिलेगा लॉर्ड और उस लॉर्ड के साथ अब उनको मिलेगा मैप कंट्रोल। मैप कंट्रोल के साथ साथ लेन जो है पूरी सिंक की जाएगी और कोशिश रहेगी कि इस दौरान जो है फटाफट से जितने ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो लिए जाए और एक बार फिर से हाईलाइट की तरफ जाते हुए दिखेंगे पीछे। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर वेलियंट गूल्स का पूरी तरह से कमबैक आ चुका है। जैसे एक अच्छा अल्टीमेट आया था कार्मिला से, उन्होंने पूरी की पूरी तरह से एडवांटेज ली एंड मेड श्योर कि एनिमीज बच नहीं पाएंगे। वैसे वाला गेम प्ले काफी कम टीम से हमें देखने मिल रहा है, बट वेलियंट गूल्स आज यहाँ पर दिखाना चाहती है कि वो गेम क्लीन स्वीप में लेके जा सकती है। अभी तक जैसे हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत टीम्स प्रेशर बन चुकी है लॉस सुरेल्स के हाथ में भी, तो आई काइंड वांट टू सी ये प्रेशर कैसे अच्छे तरह से रखेंगे क्योंकि लॉर्ड आ चुका है एंड लॉर्ड के साथ यहाँ इनहिबिटर जाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एलिस यहाँ पे मौजूदा रहेगी तो थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, वो मिनियंस क्लियर आउट करने में मल्टीपल टारगेट यहाँ पे बोल सकते हैं कि माउंट डाउन किए जाएंगे और उसी का फायदा उठाया, लॉर्ड को क्लियर आउट कर दिया। इनस्मिन आते हुए दिखेंगे यहाँ पे, एल्डा की तरफ जाते हुए दिखेंगे, अल्टीमेट का इस्तेमाल क्या है, बचेंगे एलिस हील करते हुए। ओके, कार्मेला की तरफ से अल्टीमेट आ सकता है, कोशिश रहेगी मैच के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उनका अल्टीमेट आता हुआ उसी के साथ वो डैमेज लगेगा। मेज को अल्टीमेट खोलने का प्रयास नहीं मिला, यहाँ पे कर्स ब्लड का इस्तेमाल किया है और इस ओके विंडर क्राउन का इस्तेमाल किया था, फ्रीज लगा था, यहाँ पे डैमेज देते हुए दिखे, कैरी का फाइनली डैमेज आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, पीछे हटना पड़ेगा, डबल के मिला है, ट्रिपल के जाना चाहेंगे, शटडाउन मिलेगा यहाँ पे मर्ची की तरफ से और एक के बाद एक पूरी टीम जो है वो जाती हुई दिखेगी। वेलियंट गूल फ्लिकर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे अकेले बचे हैं अपनी टीम के लिए। सुयू उनके पीछे पड़ चुके हैं, बीएमआई का इस्तेमाल किया है, मार्सी ऑलरेडी उनके पीछे, उनको चेस डाउन करते हुए बीएमआई का इस्तेमाल करते हुए पीछे आएंगे बुश की तरफ, लेकिन सुयू ने वहां पे भाप लिया, उनको डैमेज देते हुए जाएंगे। ओके, विंड ऑफ नेचर का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम एचपी पे पीछे छोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्बो आता हुआ दिखेगा और फाइनली शट डाउन मिलेगा। लेकिन उन्होंने इतना समय बाय कर लिया है कि उनके जो टीममेट्स है वो आके बेस बचा लेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टिल वेलियंट गूल्स उनके पास अभी भी एक और मौका रहने वाला है कमबैक करने का।
डेफिनेटली मौका यहाँ पर बनी रहेगी, बट जैसे टाइम खींचते जा रही है वैसे ही मार्क्समैन के पास स्नोबॉल आ चुका है, स्पेशली दोनों स्नोबॉल। यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है लॉस सरियल एक एक अंदर जाते हुए हर एक मेंबर लूज करते जा रहे हैं, स्पेशली द फ्रंट लेनर्स एंड मैक्स। पता नहीं कैसे मैक्स ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन होते हैं हमेशा यहाँ पर जो पकड़े जाते हैं एनिमीज के वजन से। थोड़ा सा दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अभी प्रेशर बन चुकी है, लॉर्ड आ चुका है एंड यहाँ पर लॉर्ड दोनों टीम्स को चाहिए। बिल्कुल, और उसके लिए यहाँ पे फाइट होती हुई दिखेगी। कैरी अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है उधर, लेकिन बचते हुए निकलेंगे लीप ऑफ फेथ का इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही कम एचपी पे। ओके, कैरी का डैमेज आएगा, अल्टीमेट यहाँ पे फिनिश ऑफ होता हुआ दिखेगा। दूसरी साइड से जाते हुए दिखेंगे कार्मिला मौजूदा है, कोशिश हो सकती है डैमेज देते हुए दिखेंगे। हिल्डा वो बचते हुए निकलेंगे, यहाँ पे एलएस अल्टीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर की तरफ, उनकी तरफ से सस्टेन आ सकता है, रोका जाएगा पीछे से। मेज का आगमन, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, कैरी यहाँ पे आती हुई जाएंगे, एक के बाद एक उनको यहाँ पे जो है गला दिया जाएगा। कैरी को मैं डाउन नहीं किया तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ेगी मेरे दोस्त, और फिर दोबारा से 3 बंदे दाराशाही होंगे टीम वैलियंट गुल्स के, और उसी के साथ टीम लॉस सुरियल यहाँ पे आ चुकी है, और उसी के साथ आई थिंक क्या ये एंड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा डैमेज लिया, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, फ्लेकर का इस्तेमाल करना पड़ा, बचते हुए गए हैं पीछे। ओके, लॉर्ड का आगमन होगा मिड लेन से, बट पूरी टीम उनकी जो है वापसी हो जाएगी जब तक लॉर्ड यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेज वहां पे आती हुई दिखेगी, नहीं की तरफ से डैमेज आता हुआ दिखेगा। सेल्सिटोल लाइट मार्क करना चाहते हैं, अंदर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन मैक्स वो बचते हुए निकल जाएंगे इस समय। तो लॉर्ड लेने का भी ज्यादा फायदा यहाँ पे होगा नहीं पीछे, क्योंकि वो लॉर्ड को भी यहाँ पे गला देंगे। उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि मार्क जो है आपको किसी भी तरीके से कैरी को पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कैरी अगर निकल गई एक बार तो आपकी आप बोल सकते हैं कि रात की सांस आप ले पाएंगे। हर बारी कैरी की पोजीशन जिस तरीके से वो जा रही है टीम फाइट पे, अभी बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है वो। हिल्डा की एक अच्छी बात ये है कि वो मार्क कर रही है कोर एनिमीज को यहाँ पे बात की जाए, एमएम के ऊपर लगातार वो प्रेशर बना के रख रही हैं, उनको जाके सीधा जो है डैमेज देती हैं, जिसके कारण उनको जो एस्केप स्किल इस्तेमाल करनी पड़ती है, उनके पीएमआई वगैरह यूज हो जाता है। और चलिए यहाँ पे वो लॉर्ड को तो सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है। गेम जो है अब 19 मिनट के रॉक पे आ चुका है। उसी के साथ एलिस का आगमन बोलेंगे यहाँ पे। एलिस के चक्कर में ना यही रहता है कि एलिस पर जो लेन क्लियरिंग एबिलिटी उनका एओई है वो बहुत कमाल का यहाँ पे वर्क करता है डिफेंस के तौर पे, और वो इस समय जिसके कारण बोल सकते हैं कि जो एक हल्का सा एडवांटेज भी आया था वेलियंट गुल्स की तरफ, उसको पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया था। और सेलेस्टियल ट्वाइलाइट मौजूदा रहेंगे यहाँ पे, दिक्कत हो सकती है, बचेंगे। ओके, बुश चेक किया है, हिल्डा आती हुई दिखेगी, कोशिश किया लेकिन पीछे हटे हैं। अभी भी बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, बहुत सस्टेन वे में खेल रहे हैं। बॉट लेन का टरेट वो लेने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। ओके, कैरी वहां पे मौजूदा है, इस बार मार्क करना चाहते हैं लेकिन पीछे से आते हुए दिखेंगे, स्टन मिलेगा। ओके, फाइट जो है यहाँ पे इनिशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं बराट्स किसी भी तरीके से, वो फाइट यहाँ पे लेना चाहते हैं। सुयू वहाँ पे मौजूदा है, लेन क्लियर कर दिया है, धीरे धीरे जो है लेन प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि टीम्स को जो है लेन क्लियर करना पड़े, और एक बंदा कोई भी अगर फंसता है वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। और रेड बफ लेने का प्रयास करते हुए दिखेंगे O2, उनको मिलेगा रेड बफ। ओके, एलिस चेंज कर रही है, बहुत ज्यादा पीछे हटेंगे, डैमेज दिया है हल्का सा। बहुत अच्छी तरीके से अभी गेम जो है वो सेटअप होता हुआ दिखेगा, कोशिश रहेगी, अंदर डैमेज आता हुआ दिखेगा। ओके, एलिस के ऊपर प्रहार, एक बार आइटमाइजेशन की तरफ नजर डालना चाहेंगे। लेट्स सी मेज ने यहाँ पे क्या बिल्ड बनाया है। ओके, मेज ने यहाँ पे देखा जाए तो एंटी हील, ओके, डिवाइन ग्लेव काफी अच्छा है यहाँ पे। तो फ्रेंड लीनर्स है उनको गलाने के लिए वो आइटमाइजेशन तो भरपूर रूप से बनाए, लाजमी आइटम्स जो है वो यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, कोशिश होती हुई दिख सकती है, अंदर जाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एमएम का प्रहार होता हुआ दिखेगा, और क्लोन यहाँ पे मौजूदा है, बैक लेन की तरफ मार करते हुए जाते हुए दिख सकते हैं। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम है, बचते हुए निकल जाएंगे मार्सी। उसी के साथ डैमेज अभी भी जो है क्लियर का प्रयास पीछे की तरफ, और इस बार कैरी को मार्क डाउन कर दिया जाएगा। फाइनली कैरी अभी भी जिंदा है, कैरी को नहीं, यहाँ पे आई थिंक मेज को जो है उनको मार किया था, हाँ बिल्कुल। उसी के साथ कैरी भी यहाँ पे फिनिश ऑफ हो गई है, डबल किल मिल चुका है। मैक्स यहाँ पे जाएंगे, वो बैकडोर करना चाहते हैं और रिकॉल लेना पड़ेगा टीम्स को। एक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा
एक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं, फायदा नहीं होगा। एमएम ऑलरेडी जा चुके हैं बेस की तरफ, सुयू आ चुके हैं, रोकने का प्रयास, सन मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा नहीं। ब्लेजिंग ड्यू का इस्तेमाल किया है डैमेज देते हुए, लेकिन बेस की तरफ आ चुके हैं। बीएमआई का इस्तेमाल किया है, पीछे हटे, डैमेज देने का प्रयास, O2 पीछे से आते हुए दिखेंगे, डैमेज लगाते हुए दिखेंगे, ब्लड का इस्तेमाल और उसी के साथ यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। कोशिश करना चाहते हैं लेकिन मिनियंस अभी अवेलेबल नहीं है, फिनिश ऑफ होते हुए दिखेगी, कार्मिला खुद को सैक्रिफाइस करेंगी, उसी के साथ पीछे हटे हैं, मिनियंस आ चुके हैं, ऑलमोस्ट मेज का आगमन हो चुका है, लेकिन मेज यहाँ पे जब तक हिलेंगी आई थिंक तब तक एंड हो दिया जाएगा। और उसी के साथ क्लीन स्वीप, वैलेंट घूल्स क्लियर आउट करेंगे यहाँ पे बेस को, और 2-0 के साथ इस मैच को जीतते हुए हाइलाइट्स की तरफ एक बार पीछे यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे। देखिए जिस तरीके से लॉर्ड के ऊपर फाइट हुई थी, अन्य की तरफ गए, डैमेज देते हुए बैक लेन को टारगेट करना चाहते थे, O2 की तरफ से कमाल का आप बोलेंगे डैमेज आता हुआ, सस्टेन भी कमाल का लगा, और उसी के साथ फिनिश ऑफ किया पहले मेज को, फिर एलिस का इमॉर्टलिटी पॉप ऑफ हुआ, पीछे बराट्स इमॉर्टलिटी के साथ थे, उनका अल्टीमेट यहाँ पे लगा, कैरी को पकड़ा, और उसी के साथ यहाँ पे उनको भी शट डाउन दिया O2 ने। वो कमाल का उनकी तरफ से रिटालिएशन आता हुआ, और एक तरफ से बोल सकते हैं वैलेंट घूल्स, लक उनके हाथ में, और लक के साथ साथ वो बोल सकते हैं कि वो प्रैक्टिस वो भी उनके हाथ में, जिस तरीके से ये मैच को लेकर गए हैं वो कमाल का। और यहाँ पे मैच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पिछले गेम में भी उनका तरफ से कमाल का वो डैमेज आ रहा था, इस बार भी MVP बनते हुए दिख रहे हैं, नहीं कमाल का खेलते हुए, और बहुत अच्छी तरीके से खेला। अर्ली गेम पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं कि लॉस के पास था, लेकिन उसको कन्वर्ट किया विक्ट्री की तरफ ले जाते हुए, और वैलेंट घूल्स कमाल का खेलती हुई, कमाल का ये मैच रहा, दोनों ही मैच में मजा आ गया। पीछे क्या कहना चाहेंगे, कुछ शब्द आपके? डेफिनेटली यहाँ पर दोनों टीम से दिखाया कि कुछ नया हीरोज के साथ भी डोमिनेट कर सकती है। जैसे लास्ट मैच के बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो ओ माय गुडनेस, यहाँ पर अर्ली गेम, मिड गेम, इवन लेट गेम काफी हद तक टीम लॉस सुरियल्स के हाथ पे ही था, बट पता नहीं क्या हो गया, अचानक से यहाँ पर उनके हाथ से सब निकल गया। एंड वो अगर मेज वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ जाती तो पॉसिबली यहाँ पर वो गेम बचा सकते थे, बट वो फ्लॉड है तो वो क्लियर हो ही गया था। बट कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक जैसे हमारे मंडे को जो स्क्रिम्स, आई थिंक मंडे स्क्रिम्स तो नहीं होने वाला क्योंकि हमारे क्लैश ऑफ स्टारलाइट चालू होगा, बट आगे के जो स्क्रिम्स होंगे उसमें आके प्रैक्टिस करें एंड उनका सिनर्जी भी देखने मिले। तो इसी के साथ चलिए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि अभी भी थर्ड सीरीज बाकी है।
Are you all ready for the action? Because we are here for the game number 3, the last match of Team Maverick versus Elite Esports as Algambo Esports MOBA Warmup Class Series. This is your boy STZ, and with me will be Ray for the game number 3. So let's see who will be taking on the bottom, who will be winning this last game, because this will be the last game for the scrims as well, because from next week onwards we'll be having the Clash of Starlight, which will be a tournament. 16 teams already been participated into the tournament, and we have already shown you the format. It will be BO1 until the semi-finals kick off, BO3 in the semi-finals, and a BO7 into the grand finale. So are you all excited for the tournament? Because I am a lot right now. It's like pumping the blood from the heart to the mind. And here we are for the game number 1 between these two teams, Elite Esports versus Team Mavericks. Ray will be being with us. So what do you think, Ray? Mavericks going to, reclaim the victory, or Elite Esports after a long time, after a long break, they're back into the screen. They're gonna do something which will remind them of their, potential. Yeah, we have not seen Elite Esports like for 3 to 4 weeks, I believe. Like, they are already not here ever since we started the BO3, but I believe even when we had the BO1 series going on, they kind of stopped playing for a while. I think they took a break, but now looks like all of their OG members are back, and they're all in the same squad too. So we are going to be seeing them back in action. Let's see how they've been perhaps scrimming somewhere else or ranking up and practicing, and how good it is. Because I guess it is possible, because the meta shifted a lot mid-season suddenly during the MSC, and that was also one of the reasons, PH and everything, and that's a lot of things we can mention. But yeah, now they're going to be facing Mavericks, who have been one of the most active teams alongside Valiant Ghouls in the weekly scrims. So let's see how Elite performs. Another thing I would like to mention today, Mr. Consistent is not playing. Instead, kridox and Coconut Water will join Team Mavericks. So that means that we'll see someone playing the jungle tonight differently. And I'm curious how well they will fare, especially considering now they have given away the Hirara. Some new names towards the Team Mavericks, and some new players as well. So do from Elite Esports. They're going with their OG team lineup as mentioned. The last pick about to come in, the Rafaela into the mid or into the roam is a question right now. It's a flex for the scene, but that will be the Alice coming up into the EXP. Rather than Alice, I could have thought to go with a Esmeralda, because Alice in this meta, Ray, I don't like it. But with the Alice being there, you have a chance to counter it down into a lane-to-lane matchup. The Yuzong is open, the Dirot can come up, even the Barats can force to being played into the jungle. So at this moment, but I kind of having a gut feeling, Ray, that is this Barats is going for the EXP into the hand of G-Razy, and there you go. The carry is coming on to the hand of Team Mavericks as well. An all early carry because of this Alice pick maybe, and now you will not go for proper sustain, because the true damage will burn you down. So let's see what will be happening. Bans coming in. I think Ash, what the Alice is, I guess, picked off, because right now the top meta contender for the XP lane is the Esmeralda and the Uranus, and the only other EXP that can sustain against Esma and Uranus is the Thamus and the Alice. Yes, you can play the Dairos, but Dairos is only like 1v1 lane matchup hero, right? So I guess Elite Esports, considering they have a Hirara who's also like a very soup in, soup out assassin and can't exactly sustain, they wanted someone that can stay in the team fight longer, and they just decided, hey, Alice is gonna be the option. And like you mentioned, G-Razy has been playing the Barats for a long while, so they probably decided this Barats will probably be the XP later, Alice will sustain pretty good. That might be the explanation. But with this, now we move on towards the first pick coming in from Team Mavericks after the bans. They ban out 2 marksmen and along with the Zushin, while Elite Esports, considering they don't know the jungler yet, could be the Barats himself like you mentioned, or maybe not. They won't take the risk with a Ling who can out damage the Hirara, and with that they'll go with it. Oh, an Arlot. So that means, Ash, that this Barats is actually jungle. You can't say that. Arlot can be used in the roam. Too weak. Definitely 2 flex picks which can actually be placed to a lot of roles. But right now,
Elite Esports are actually going for the jungle. And they have already the Hirara, so they ban the Ling. And then they ban the Kufra. Both the potential bans which can give Hirara a little bit of time, but okay, that's a Mia coming in with a Carmina into the roam. That means the Rafaela, as I mentioned before, it's a flex pick. It will be used in the mid lane, is right onto the mark, and we have seen this pick, this kind of synergy, this kind of pick from the last time in the MSC in 2026 recently from Aurora, Turkey. And not only that, but we have also seen it from IGN, the OG esports in India. And there you go, I told you, like, there might be the chance that Alot can play in the roam or to the EXP, and it will be played in the EXP Baras jungle with the Minotaur coming into the roam role as well. But why an Alot Rain? Like, you could have gone for the Derot, Esmeralda was open, Yuzong was open, all these things, and you're going for a Alot EXP against the Alice. Is this because of the set, because of the crowd control they wants to go for, or it's like they're gonna stay in the comfort? Because I feel like G-Reezy is going to play the EXP. What do you think? I mean, you can actually see he's going for the jungle here. And another thing is, I guess Mavericks really want to play for like Fly today, who has shifted to the gold lane, and I guess they just really want to make sure people can't reach Fly, so they're just gonna go with letting the carry dish out the damage, while the 3 hefty frontliners will just provide all the crowd control for them. And with that, we're in the land of Dawn, and Mavericks today, their whole lineup is very different. Fly has switched to gold, and Coconut Water comes in with the mid lane, and then we're gonna be getting the G-Razy, who has been playing the gold and this for a longest while. Okay, they asked for a pause. Ask for the pause. That might be the network issue in Assam, definitely. Your weather is so cracked, bro. I mean, every time I hear the weather is so bad there, that's why we can see that eventual process in the game right now. The pause, the technical pause. And it will be coming back soon for the game. But let's talk about the Hirara. Maisini Kairazu. Two of the fangs of Hirara, and you can shift the attacks with that. 2 skills, and we started it with a not a good hero, but now she's an potential hero into the jungle. If you get the early snowball, if you get the early kills, then you'll be dangerous into the mid to late phase as well. But here we are for the game number 1, guys. The match is on, the pause is off, and we can see that little bit of stun coming in from the mid side. And out of the top way, Mia is going on for the carry there, 1v1 situation, and gonna get the kill there. Kaizel on to Fly. First blood. I think, Carry, with her range right now being one of the most weakest factor right now in the gold lane meta, considering we're back to traditional marksmen right now. I mean, we do still see sometimes, the dual fighter lane sometimes, but it's mostly the traditional marksman. Carry loses it out due to a simple reason: her range is just way too less. She can win in the late game, but I think that's the reason actually the Mia just makes sense, because Mia will diminish the carry in the late game anyhow. Doesn't really matter the fact that she has 2 damage. An Inspire Mia cannot be defeated in a 1 versus 1 confrontation. But right now, okay, Minjae is going to be fine as well. Just gives kind of like not that much of a necessary vision, but I believe we are seeing the MSC, Rafaela mid lane popping up for the side of Elite Esports, trying to execute it. They are very reliant on the Hirara and Mia to do all the work, honestly. Ray, is the Elite into the Starlight Clash? Like, they're in or no? What did you say? I didn't get you. They register for the Starlight Clash? Elite Esports. Yeah. Let me just quickly check. Okay, before that, the engage is happening. We're gonna see the Baraz going in for the attack here into the... With the help of the ultimate, he managed to pin it down there. And look at that, retribution. G-Razy with the turtle finds it away. And now we're gonna see the kill on the hero. Minze goes down. Coconut is getting the kill double into his hand. Gonna go for a triple. Crypto's got into the hand onto that Mia. 4-man down. Rafaela managed to revive the Mia at the perfect time, but they lost 4 members.
instantly with a turtle into the hand of G-Razy. Definitely not a good start. The start you want. They did not get it onto the mark. But I concur about the fact of the Mia and the Kariva thing. But there you go. Another zone coming in there. Mia with the Moonlight. Get that gold crab into his hand. We're going to see the zone coming out from Curse Soul. I think, Ash, considering you're playing a dual roam mid side, Hirada damage is not going to be enough. You really need the Alice to be doing a little bit of work. After that, maybe the Hirada can jump in. And let's be real. Your whole lineup right now relies onto Kaizel, the Mia, who's going to be the main source of the ADC. So they have to rotate in a different way than normal. Mid side though, but see, they use up the resources, but the damage is not enough. It's a very team fight only execution lineup, which they have to watch out for. And yeah, Elite Esports is in the Starlight Clash. They are faced against Lost Sureales. That's what the thing. And okay, I mean they are in the Starlight Clash. Yeah, Okay, Lost Sureales is their enemy. Let's see what. I mean, both the teams are there in the Clash of Starlight, and I remember Mavericks' enemies are Morians. Royal. So that will be a pick of a match in the early game, into the early round, of course, and one of the team going to get the spot on for the semi-finals. So let's see, guys. I mean, not for the semis, but for the quarterfinals before the round of 16. So right now, another engage happening there. Coconut Water falls down before he can goes in for the rough waves. Another one onto Cursol. Wisteria is getting the kill there. Then happen onto Cryptos. That will be Kaizel onto the mark. Gonna go for the blood on here. Oh, not a good chance, not a good position, but gonna get back into the track. You will be going in for the way. Retribution, one shot away for getting that kill, but not gonna get it into the mark. Beautiful escape, beautiful execution from this setup team. Elite Esports into the second turtle. They equalize the score with the macro. Yep, pretty good. Finally, they were able to get the 5v5 that they wanted. There comes the Curse of Blood, then the Alice's Throne of Ruin. It's just too much AoE, and then Mia is just dishing out the damage from free, and Rafaela is just making sure they get the constant poke as well as the heals that are coming in. And I believe if they are able to maintain that composition, basically like to continue that, they can win. But if they're found solo, yeah, they're down. Mavericks, who has way better solo damage, because you have the Kadita who can take down anyone solo except for the tanks, of course, even the Rafaela too, by the way. And then you have the Bharats who can also pick up a target easily. So 1 versus 1, their jungler and mid lane do win it out. Top side. Look at it. Carmela coming in for the Curse of Blood. At the same time, I'm going to see the Minotaur going in for the bonk. That will be the Minnow and Fury. And Minji goes down. Beautiful execution coming in for the Barats. Goes in there. G-Razy goes in for the spit. And he's going to get the mark onto Kaizel. Coconut Water with a final blow. We see the Retribution popping with there. Rafaela in a very bad position. Rara going back to the immune. But no, he re-engaged back for what? He re-engaged for what? Why? Like, really wanted to clear the lane, I guess. You were about to play that turret. It doesn't matter, bro. You could have... No, man. This is very wrong at this moment. Mia got respawn again, and we're going to see that mid-tier 1 falling down. And you are taking mid-tier 1. You could have given up that tier 1 on the top. And into the meantime, throughout the wind, used... the Rafaela goes down there. They're trapping down the Alice. A lot of sustain. We can see it with the Vengeance coming in. Blood on into the mark. She can escape it out. There, look at it. But oh no. Oh, it's a flicker. Nice escape. But our Lord goes all the way inside the tier. My goodness, Cryptos. With that blink. With that slash. Really good. He saw the kill and he had to take it. And he secured it pretty well. And this is the thing, I told you, right? They need the Alice, they need the Carmela, they need Rafaela, they need everyone together. That's the only way they win a fight. So, Elite Esports, if you cannot take a fight 5v5, don't take it at all. We get a highlight of the kill from the Arlet. And now, we're going to be going into the last circle of the game, taken away from Mavericks. They're 9-4. They are 5 kills ahead, around pretty much the same goal. This is a really good thing for Elite. They have not lost much gold at all. And look at that, they might go for the kill. They do. Okay.
Another engage happening into the jungle area. We're gonna see through the wing connected. What a CC comes in there. Oh, that's a double for Kaizo. Gonna go for a triple at this moment. They manage to sound down Cursol. Cursol going back, but still wait. Triple for Kaizo. They're gonna go for the Maniac. That will be the stun coming in. No, immobilize, and that will be the Maniac for Kaizo. Oh my goodness. The man with the hunt. The man who managed to make a death pit out from Team Mavericks. Look at it. First to the blow. Second to the on, third for the bloodlust, and fourth for a clashy finish. They will nail any fight where they are able to get the Carmilla, Rafaela, and Alice combo. And Mavericks, they have to realize how Elite Esports win condition is. They need to separate them. But now that your turrets are down, like top side completely open with only the base turret, mid side tier 2 and bot side tier 2, how do you play like that? How do you separate? It's gonna be the big question for the side of Mavericks. And since they are not gonna be able to separate, they won't be able to win any fight until then. You got a good start. You had the first total and you got 4 kills, and after that we can seeing that Elite Esports coming back into the scene. It's not a big difference into the score, but right now another engage happening. Curse of the Blood used as well. We're gonna see that Hirara going inside the tier. Curse goes down, straight out to coconut water. Guys are coming in, double onto G-Razy. They go for a triple, unstoppable Cryptos, as well as a triple onto Fly. 5-man wipeout at just 9 minutes and 20 seconds of the time. Team Mavericks right now crawling behind, and it will be Elite Esports with the finish. They're taking down the tier 1 onto the bot, going inside the crown, locking it down with that one cannon minion. Whole Maverick coming back for the retreat, and they will be retreat back because it will be the clearance coming out from Team Maverick there, but definitely this is what it is, Ray. Yeah, it is, Ash, because right now the side of Elite Esports, they were just waiting for this moment for this lineup to shine, and now it is shining to the maximum. And Mavericks, they have nothing they can separate it, and now their heroes, which were really strong, are looking very weak because Karita, she cannot take anyone down because Rafaela will just heal if she decides to burst someone from 1 HP. And then you also have, I mean, Karita basically has to completely disintegrate someone. That's the only way, or else if they survive by even 2 HP, she cannot wait for the rough waves to return because Rafaela will just heal them. So she really needs to just take out the Rafaela, but how can you do that? She has a purify. So yeah, I think Karita's right now made completely weak, but let's see. Coconut water, can she use the coconut water to take someone down? Nah. Not coming in. Coconut water is the first one to falling down. Curse the Blood uses this one, going for a double. Cryptos falls down. That's what a monster into the hand. Okay, Kaizo triple. G-Razy Maniac once again hero this time. First Kaizo, second hero. 2 Maniacs, 1 game. Team Elite Esports rampaging at this moment with the power spike at the game number 1. Victory goes to them with us. No mistake. No flinch. Not even a single chance to, you know, they showed no mercy towards the setup team Mavericks in this game so far. And they crawled behind, but they couldn't manage to reach out there. 18-9, the score is so well. You're gonna see that hero with Kaizel both having the Maniac. Well played, yep. Team Elite. Yep, Elite Esports, after coming back, I mean, after a long while, they have come back and they look really strong right now. Their lineup looked very team fight heavy, very front to back, and they just completely nailed it. It is really impressive to like come up with a composition like this, which has like 3 setters and 1 damage dealer only, along with, of course, the assassin to sweep in, and they nailed it. This is a very classic standard, like standard lineup, and to execute it, I really think they have practiced a lot outside of course, the scrims. They have definitely practiced, and it is visible, and it's really good because Mavericks is not a team that loses this bad. I mean, I'm not saying this was a very bad loss, but the fact that there were 2 Maniacs, it kind of, you know, makes it, you know, you get the point, right, Ash? There were 2 Maniacs.
2 maniacs and 2 from the most, dependent role, that is the jungle and the goal. So definitely, Elite Esports before the match against Lost Sureales with this kind of scrim, they're really getting the power spike. They're really getting waken up. That's what I can say, because last time, as you mentioned, like they did not even being there in any of the BO3 scrims at Algambo. It's like a 1 month rehab they had, and now they're back into the scene. They took the rest. With this kind of, coming back is really what you needed after a great rest. Elite Esports really went on to the meta, goes for the Rafaela. Did know that the early game little bit slipped out from their pocket, but then they managed to, pull it back with a proper way, securing the structures, giving the map advantage to his team, and then probably setting up rampage into the scoreboard. 18-9 with 2 maniacs. It's an equalizer if you see 10-9 from both these sides, and then you add Kaisel's maniac, Hero's maniac, and it becomes 18-9. So definitely those 2 maniacs literally change the whole fact of the game. It started with Kaisel, ended with Hero in this game number 1. Now we'll be entering into the game number 2, Ray. So what do you think? Will there be some changes in Mavericks into the lineup or into the gameplay they do? Because so far in this 3 days, we have been seeing G-Razy frequently changing his roles, not even playing in the goal, then shifted to, EXP. Now he's playing in jungle. So is that the thing which is hampering them, or is it's a trick behind the Clash of Starlight? They don't want to reveal the drop. They don't want to reveal the strategy. Is that the thing? We have seen something like this from so many teams out there in the pro league. Okay. You might be hitting the nail on the head, Ash. Could be. Mavericks has been losing recently after the Clash of Starlight announcement. Could be. Maybe. Could be. That's the thing. Sure. What's before we go into the game, Ray, this is my personal question to you. Power rankings for Clash of Starlight. I mean, without any biasness, Valiant Ghouls does look like to be possibly the winner, considering they have improved from a team that was like, at first they were pretty egoistic, but then they got humbled 2 times. After that, they have been. Let's not set the winner. Let's just talk about the 4 power ranking. Semi-finalist team. Yeah. 2 finalists. 4 semi-finalists. 4 semi-finalists. Well, I mean, we already have the teams that are the Kiwi trio, right? Kiwi is a strong contender for the finals. Huh? Nova did not participate. Oh, Nova did not participate. I just noticed. Yeah. Okay, Nebula and Zenith. Nebula is pretty strong right now, I would say. Like, actually they have surpassed Zenith in terms of strength. Nova, I feel like Nova is pretty strong too, but yeah, they could not really participate due to probably like exams and stuff. The others, like, there are a few squads, by the way. Like, for example, the Star Boys, I have not seen them. Void Light, their gameplay was pretty good, but they've only played 1 scrim, so I can't make a judgment. They won that one, so yeah, not sure how good they are going to be. And then there is Doomwalkers, NCC LAN, they came 4th. So we have a pretty few good teams, like as well as Ace Invoker. So yeah, I believe Valiant Ghouls won't have a easy way in, and that's the thing. Scrims, everybody, some participate, some don't, but in a tournament, many people do. It's going to be interesting. But one more interesting thing is going to be that Mr. Consistent is back from Mavericks, and so yeah, we get the hit out on his hands immediately. So Fly will go back to mid lane, G-Razy will go back to EXP. I'm gonna go for his goal, regular goal. I think they're having some problem with the XP laner here, but Team Mavericks going for that Hirara, and then we see that Elite Esports do have a chance to go for the barrage. That's what I'm talking about, because that's what the reverse role looks like. When you are going for the Hirara, they're gonna go for the barrage, and Eudora is open right now, so they're gonna click onto the Eudora as well. That's a beautiful drop coming out from Elite Esports into a match point kind of game. As you mentioned about the Mavericks are actually not going to have an easy
day run for the Clash of Starlight. They're fighting against Maverick and Morin Royals first. If they win there, they're gonna face Huey. So yeah, it's not an easy run for the Clash of Starlight for them. So they really have a bad way to go for the final. So let's see how they're going to cope it up. Woo! That's a beacon into the hand of Team Mavericks. Now Ray will be to their side for sure, because they will ask like the Rabi Kishan's question, money or fame. And for you, like Ray or Jushin? Jushin, bro, Jushin. Ray follows. Zushin and Hirara is insane face card, honestly. Prettiest heroes they've released so far. I hope they don't release another Hirara, bro. Yeah, definitely. I mean, it looks good. I'm literally. They have the same angle, right? The mogging angle. Yeah, showing their like the jawline or whatever you can say. But at this point, you're gonna see that Terizla into the EXP against Barat. How it's gonna work, I'm not sure about it. It's like just like the R-Lot pick, because you went for the R-Lot for some setups. Cryptos, what do you think? Cryptos is not in the game right now? Yeah, Mr. Consistent is here, so he's gonna be the jungle. Fly is the mid laner. Jirezi goes back to the XP lane, and Coconut Water will be their goal laner this time. But Curse Roll, he's a roamer. Basically, Curse Roll and Mr. Consistent, they don't change role. A roamer and jungle. Mia again. Oh, a lot of squishiness we can see from LED Esports. Could have tried something into the roam here, like maybe Natalia, something new, or you can also go for damage roam like Hellcut if you want to try something new. Because look at it, the Eudora, the Nolan, the Mia can get some hamper with those kind of pick, but no, they're gonna go for the straight out with the high loss. Okay, that's a good pick though. But I don't know why, but I was expecting a Melissa, but the Melissa was banned, so definitely that's the reason they did not go for it. But then, why not an Obsidian? They just want the daughter to beat up her daddy, I guess. Okay. Clint could have been a thing. That's the truth, right? That's daughter versus father. Definitely. And here we are. The sets are ready. We can see the Carmela into the roam. So do that high loss into the side of Team Mavericks. Team Mavericks needs to show their true potential into this game number 2, because it's a do-or-die game for them. If they lose, they will lose their last game at the scrims of this week. But eventually, we'll have a power start maybe into the game against Morin Royals. We're gonna watch it out soon into the Starlight Clash of Starlight from Algambo Esports. From next week onwards, do join us, guys, from 6 o'clock, because first day will be round of 16, 8 games BO1. Second day, 4 games of BO1 for the quarterfinals. Then third day, another 2 BO3s, power packed BO3s. And then we have the last day for the last venture, that is the grand finale with the BO7 on the Thursday. So 4 days, 4 packed of big things. I welcome you all, and do not forget to subscribe the channel, share the stream to your friends, liking the stream, comment down whom you're supporting for the Clash of Starlight. And here we are into the game number 2. Look at it. Well start, pretty move from both these sides. They don't want to go for the rumble. But before that, a little bit of a poke coming on to the Carmela here. Gonna go for the damage. Okay, Mr. Consistent. Retaliating back, Retribution. Gonna get the first blood. Minjay. Immediate. That's why I was like, why did the Hira start on the purple? Like, you could have started on the green. That should have known the plan. They wanted to kill. That's why he started on the purple, so he could immediately fight someone. And that someone was Minjay. So immediately, Hirara has gotten her first kill. If that 1 becomes a 2, then a 3, LED Esports, you're gonna struggle a lot. Last time you took the Hirara, but now it's in the hands of Mr. Consistent, who has still the record of farm, like basically having the highest, speed in farming. He became level 15 in 8 minutes 37 seconds, and I believe it has not been broken yet by anyone. A beautiful instinct you can see from Coconut Water. The
The way he goes back after knowing that there might be a potential gank onto him. Okay, that's a beautiful stun coming out as well. And Rara might gonna go for it. Ooh. But Fracture onto the mark. Mr. Consistent goes down with a recall onto the face. Hero. Damn, that was fast. He caught Hirara before she could basically use her fallen maple. Could not even land the immunity. Usually, like, you think that would be predictable, but no, Hero was just so fast. Basic attack, second skill, ult come out. And now even gets the turtle. Okay, but he gets stuck. Turtle, but that's a penalty zone connected onto him and falling down immediately with that crash. Double for your soul. Gonna go for a triple. Minjay not in a very bad position and gonna get taken down by Mr. Consistent. 4-man got away, but due to that 4-man, the damage got splitted out there. That's why he couldn't find the kill. Hidden Moonlight being used. Goes back to the safer side. Layla with the Malefic Roar. That Eudora damage was insane. Imagine she actually had slightly little bit more. That could have been a triple kill right there. But anyways, 4-2-1 right now. Mavericks still on the lead due to the fact that Nolan, he did not have any energy after taking the turtle and he was caught in the midst of the penalty zone. So yeah, with that right now, Hero, you have to watch out. You did gain some aura by getting the really fast kill, but you have to make sure you don't get stunned in because this is not the old Nolan who has CC immunity. You have 0 CC immunity. So if you get stuck, you get stuck. You aren't getting out of there. Anyways, bottom side, Coconut Water really good instinct, like you mentioned. Anytime he sees like, hey, they're not present in the map, it's time to go back. Hylos gives the vision, and now finally Lela can move out. Good observation. But what, Carmilla? Glorious pathway, a lot of damage on Minjay, onto the behind. That will be kill. Coconut Water get the hand killing spree onto the fading day. Oh, that's not at all a good positioning. Good mindset coming out from team Elite Esports. They are in search of kills, but into the meantime, it is Team Maverick who are getting it away from them. And now you can see slowly but surely Minjay is falling down eventually, and Coconut Water is getting the kills and precisely doing great at this moment. Yeah, Minjay made a mistake, you saw, right? He stunned the Lala, then used the ultimate on Hylos. I definitely believe this is a case of becoming a victim of auto aim. And on the bot side, Lela has been playing incredibly well and safe because Lela will win the late game against the Mia. So she just needs to watch out and play from a distance. And now look at Destruction Rush. Gonna be able to lower down Kaiser HP, but top side. Okay, top side, a little bit of engage is happening there. We're gonna see the Strumble coming out from Fly. Fracture comes in, Fading Day with a kill. Cursol finds on the waiver, but down happen onto him. Double for Hero. Gonna go for a triple at this moment. Can he find a G-Razy? Is lurking around, retaliate back at the safer side. Second turtle eventually goes to the half Hero. 2 turtles and some kills will gives a little bit of breathe into the chest of Team Elite Esports at this moment. But at this point, nobody is taking care of Coconut Water, and that will be a problem into the late phase of the game, Ray. I don't think they were prepared to take the Thunder's Wrath from Eudora, because if people tend to forget this new Eudora's passive, the Superconduct, it just amplifies your damage so much. Look at that, they might be able to take down Cursol. Killing spree. Fracture, a lot of damage coming in there. Eudora comes in, Flicker at the perfect moment, goes back on the safer side. Now it will be Kazel who gonna get the structure away from the Layla. That's what happening. That's a good rotation comes in. They couldn't manage to take out the Layla, but they managed to do something with the lane so that the Mia will have a better chance against the Layla. Yeah, good thing. And now, since Layla has to play from tier 2, they can even go for a flank if possible. Top side though, Baratz, he's getting caught out, but I guess he'll be able to retreat. A bit of poke, G-Razy lurking around again with the jump, but they're gonna get the stun coming in. 3v1, Fracture comes in, big kill for Hero. That will be it. The Fracture from Hero is just way too much right now. They need to like be wary because he is able to melt the Hylos. Oh, Minjay almost made the same mistake, but now Flicker wasted. A lot of resources beat it down. Another Fracture! Hero! S just became mute.
No, that's what, like hero, and I thought. Yeah, that's what I say. Sonic boom was so high we couldn't even hear it. Jokes aside, top side again. Terizla. Terizla, they're trying to cut it in the way. 3v1 situation. We're gonna see the bomb coming in. Penalty zone connected. He goes back with a flicker. We're gonna see that stun coming in as well. Hirara comes in there consistent. Fly comes in as well with the Crimson Bacon. Now getting caught behind, but look at Hero. He comes in again to advance the fracture, but beautiful escape by another than Fly. Oh, no, happen off that kill for Coconut Watcher. Slither of HP goes back to the same. Structure falling down in the bot as well. Turtle being slain by Hero. Third onto the row. Bro, that Hirara consistent. He almost gave me a heart attack. Why did he want it to like swing in the air with just 1 HP? Nice camera angle, streamer. Anyways, with this 8-7 score, Mavericks right now proceeding towards what I believe just to scale up their Layla. But look at the damage from Hero. But oh, he's also taking... Hero is running behind, but that will be killed for Kursol. Consistent, he's gonna get it in the way. Follow up from Kursol, beautiful way. Glory spotted for the run. And now you're gonna see that follow up coming out from Kaizel as well. Gonna clear out the lane. Macro wise, team Mavericks are so back right now with losing all the outer tiers from each and every lane, losing 3 out of 3 turtles. So definitely Elite Esports is doing so good with that perspective of macro. But micro is right now into the hand of Team Mavericks, and if they manage to, you know, constantly making it a lead for their side, they might have a chance to give Layla the spikes she needed. Yeah, I agree with you on that, Ash. And I think with how the side of Team Mavericks basically made a bounce back by taking down Hero, because that shutdown was pretty massive. He had 6 kills, and now the bounty is onto the hand of none other than Mr. Consistent too. So a jungler for your jungler is really, really good. And look at that, Hirata right now, she's very more active, and she's level 12. So pretty much equal to Hero, catching up slightly. He's level 13, she's 12, but the difference is slowly basically lessening. Kaiser right now, level 11. Compared to the Layla, who's level 10. So Kaiser is a 1 level ahead too. So, oh no, Coconut Water is also almost becoming level 1 as well. So they're pretty much catching up. Minjay makes the mistake. He needs to remember he's not that tanky. Last game there was an Alice and Rafaela to, you know, give her backup. But this time she's their main front tank with Wisieta, yeah. Wisieta, yeah. Vicieta. I mean, the main thing is like you don't have the flicker at that point. You couldn't have went forward. Look at G-Razy with the setup. Penalty zone being forced out there, and then going for the bonk here. And we're gonna see that spit coming in. Fracture used. Nobody gonna get down. Hirara goes in for the beautiful bang attack there. Double secured. Vicieta falls down immediately, and now they have a chance to go for the Lord. We're gonna see that follow up coming out from Minjay. He's gonna give the zone and goes back. I don't feel like they're gonna contest out the Lord here. Easy Lord for Team Maverick at the do-or-die game. Slowly they are making their comeback. But what's just happening on the bot side? Look at Kaiser. We're gonna get the structure away from the hand of Team Maverick, giving out a little bit of shock to the backdoor. Does have a chance to go for a backdoor. This is the Mia we're talking about. You can't ignore it out there. Yeah. Now their whole attention has broken from Mavericks. Even if they get a Lord or something, they constantly have to look out the bot side. Really lucky that right now the Lord is also coming in from the bot side. So they're going to be able to basically... Oh, not lucky. I just noticed Hirata took down the tier 1 only now. Okay, makes sense. So good enough. But the point is, the minions will be constantly right now pressuring the bot side. And like you mentioned, a backdoor is possible any second. So Mavericks basically has to play defensive on the bot side. They cannot let their wave management go. But top, what? Hirara, I think she'll be able to retreat. Okay, oh no! The spot will be used, but the time was so up. Shut down from Vicieta. Oh Lord, easily got, you know, this spotted in the air by the Mia's attack speed damage. Bonks coming in with a penalty zone. 3-man caught on the way. They're going to go for the follow-up live with a Crimson Bacon, and that will be slain onto Eudora. Flaming J falls down with a double coming in for the hand of Maverick. Killing spree for Fly. That's a double for Layla, but what's just happening? Backdoor! It's backdoor. That will happen. Mia going in for the... Okay. But that was a recall back from Maverick. You can see this Mia, bro, I'm telling you.
It will be a pain in where you know. Yeah, because now their whole piece is lost. Even if they win it fight, they have to constantly keep an eye like where is the Mia. The Mia right now is their advantage and disadvantage both ways. Because one way advantage because Mia right now will not be in team fight. She's looking into backdoor. So you are in a 5 versus 4 scenario. But same time, you need to send someone back to defend. And there's a risk. Mia with her Moonlight Blessing can become invisible and Inspire combo, pluck, it's gone. Doesn't matter it's a Lela or a Jushin or a Terizla, they will get melt. So you might need to send 2 people. Elite Esports, what their game plan is going to be, they either get this win and make it a sweep, or Mavericks will eventually make it a 3rd game. They pressurizing the bot lane. That's what the plan is for. Glorious Path coming in with that Fading Day. Fly goes down. Kaiser Fading Day falls down as well. It's a 1-for-1, but now a lot of good position for Kaiser. Double kill secured. Consistent gonna get it away. They're going in for the 5-triple. Execution may happen. Fracture comes in there. G-Razy lurking around. Look at the damage with that Machini. And that will be the retaliation, but look at it. Chop it up, pick it up there with a kill coming into the hand. Oh no. G-Razy, look at him. The way he's going in for that penalty zone there and get the mark onto the Nolan. So long. Equalize the thing, bro. Like, his retribution holder goes down. Why, your will be alive. Curse of blood. G-Razy versus Minji is going on 1v1. Minji will be the winner. Concussive Blast. That thing that dishes out a lot more magic damage. But one good thing, he bought so much time they got the Lord. So, good for them. Mavericks, they really want to push it to a game number 3 at any cost. And they are doing their absolute best. I'm actually surprised. G-Razy is playing pretty good Terizla. I mean, Bharat's is pretty meta, you know. Bharat's, Esme, Deroth, Glue, they're like the most top EXP laners right now, but his Terizla is doing pretty great. I would love to see it appear more. But anyways, looking at the builds right now, Nolan done with 3 penetration items right now, building up what looks like either a Blade of Despair or an Endless Battle. It's like 50-50, like he bought both of the recipes. Hirara, she's full build, so Hirara does have more damage, makes sense. But another thing is that one of her items is Sky Piercer. She just died, right? So she lost a bunch of her stacks, 30%, and that will impact how good she finishes. Oh, she gets caught out again! Try to go for it. Curse the Blood Use Hero got the kill there onto Mr. Consistent. Gonna go for a double immortality pop out for Curse Soul. And now look at the damage coming out for guys. The Minty goes down on the bill for Layla. Coconut Water right now giving a lot of damage. Goes in for the ultimate. Not gonna cut anybody into the way with the Lord and marching on the bot side. They need to clear it down as well. Look at a Fading Day running away. Penalty zone here is gonna go for the stern fly with a little bit of Pong coming in there and gonna get the kill. Meteor 1 falls down. They're marching into the Meteor 2 as well. Crafter comes in, but no, he missed it out. And now a lot of damage gonna come into the way. Coconut Water falls down immediately there with a retaliation and a reconciliation kill coming out from the side of team Maverick there. Hero goes down as well as a lot being defended as well. Now equal situation. That's you have 2 more turrets, more than them countable, but then you see they lost their inhibitor, so the nexus is exposed from their side. But your nexus is still covered, so definitely I'll say Kaiser playing safe is the ultimatum for Elite Esports to win this game. I love his KD too. 1, 2, 3. So I guess Ash, this game is gonna go pretty long, because both of these teams are very relentlessly defending and fighting. It's very brawly. Oh, Consistent. He did not even realize or did not even have the time to use the Fallen Maple to get out. He's gonna be gone. And now it's a 4v5 again. Mia now looks like she has changed her motive. She's like, they're gonna defend the bot lane anyways. Let's push the top. Let's push the top. Let's do something like from the either way, like we can give some, lane pressure, not from the bot only, but from the top as well. That will make them away from the Lord, and we will have the easy Lord. Because last time when the Lord approaches, it was a big fight when G-Razy went in for the penalty zone, get his mark onto Hero. But this time they do have a chance to go for this Lord, and they're straight away going for it. Yeah, with the Hidden Blade. And this is the thing, like before you can reach up the pit,
the Lord will be poof. The Mia, man, very strong. And since the Lord is down right now, I believe if Elite Esports now plays the bait and switch, like basically Mia is going to be the one in the team fight, and then it is Hero who goes for the split push on the top side, they can win with her backdoor regardless. And Nolan has enough mobility and wave clear to basically push, and if anybody comes, he can retreat or take them down as well. Main J pretty low. Okay, I'm gonna go for the fight before the Lord, but oh no, look at the fracture. Bit of match to Twink get the will save him. execution though. Oh Lala. Oh! With the bog, he goes in for the pick off. Look at it! Oh my goodness! Now he gets Slain out, coconut water there. Slain out to fly. Despite with the end, Slain onto the Mr. Consistent as well. Running back on the safer side. Tier 2 falling down there. Trying to defend the Lord when all of your members are going down. G-Razy went in for a heroic start. Paving Day goes down. But now they're gonna lock on the base there. Still up HP. Look at it! Guys though with the finish. What a way! Lurking around for more than 15 to 16 minutes, and you end up with a lose. That's a match point for team, Elite Esports to get on the series with a clean sweep. Oh wow. Oh. Why Sieta? Or Sieta basically. Let's make the W silent. Yeah, Sieta. Wow. Damn. That pickoff is insane. Like damn. He immediately locked onto the Lela with a flicker. Detona's welcome. Wow. That is some incredible aim and good pickoff skill right there. Like I don't think Coconut Water was at all expecting for him to cover so much distance. I mean, he doesn't. Without the flicker, he wouldn't have. He would have stopped right before the Lela. And that too, he did it in front of 3, right? They were 3 clumped up together and he only swallowed Lela. Wow. That is some good precision from Sieta right now. Really amazing pickoff. If you have a Barats like that, you don't really need to play an Arlot or anything, man. Just pick up the Barats. Wow. Well played, Team Elite Esports are really well played because the way coming back from the situation when you lost 2 lots and you got the 3rd lot and you went for a fight in which you advantage yourself with 3 kills. First Soul, he managed to go back. But I don't know why they went for the fight. They could have easily stayed back in the base defending the Lord, and the effectiveness of that clearance onto the bot lane by Kaiser was really give them the +1 into the Lord strike. It's fine. It was the last match, the last game for the last day of the scrim. We'll be back tomorrow, not tomorrow, but into the next week, Monday. But we'll not have the scrim again. We'll have the tournament, a little tournament, but it's a tournament from Algambo Esports. That is the Clash of Starlight. So are you all excited for it? Because I'm a lot. I hope you all will being part of this adventure, gonna come in, gonna join us. But till then, thank you for joining, guys. Thank you for watching me, STZ, with Ray, signing off from Algambo Esports MOBA Warmup Class Series. We'll see you soon at the Clash of Starlight. So wait for the turn, wait for the amazing stuff coming next week. And till then, good night, everyone. Sabak here.